has arrived as we move into the north for the two semi-finals and the grand finale that will be played tomorrow. First, let's shift your focus for the first semi-final between United Brothers and Legal Titans. For the toss ceremony, we've got Mr. Tulsidar Shetty, Secretary of Goa Cricket Association, along with all the council members of ACL Season 7. Got the two captains with me also. Mr. Tulsidar Shetty. Tails is the call, and it has come down as heads. So Legal Titans winning the toss. Sagar, what have you decided? We have decided to field first. This pitch is look very good, so we'll try to restrict them within 150. And we'll try to chase that score. Big game, as we saw. The last game which you guys played, it was something special because you had to come with all guns blazing. You did, and you are into the semi-finals. What is that intake that you are taking from that game to this game, as this is a very important game? In both the matches, we have chased down very well. So today also we are trusting our batsmen to chase down the whatever total we get. What's the about Kyle? Because what we saw that day was a bit dangerous, and he is recovering. What's the news from him? He is playing. He is playing as a super. Okay, all the best, Captain. Have a good one. Thank you. Batting first on this belter of a wicket. Always known that GCA always produces some terrific wickets. Any specific changes in your side for this particular game, or you are playing with the same team? We have two changes for this today's match. Pankaj and Bhaibi is not playing in their place. I'm in playing 11 along with Ashish. And wicket looks good for batting. Yes, we would like to put a good total on board, and we'll ask them to chase. 2 seasons, 2 finals, both you have won. Is there any extra bit of pressure of being the defending champions, and again you are into the semi-finals? No pressure as such. Ultimately, what happens? We have been giving our best. Last match, the Titans outplayed us. They played a good cricket last match. Today is a new game, so hopefully the new result. All the best, Captain. That's the news from the center as Legal Titans wins the toss and they decide to bowl first. But quickly, we'll have a photograph and then we'll have Mr. Tulshida Shetty to have a few words about this prestigious Advocates Cricket League. We'll have a quick word with Sir about the Advocates Cricket League. Sir, most of the times we see GCA goes hand in hand with most of the authorities, also with Iftikhar Aga sir that he mentioned that the council is working, Advocates Cricket League is in hands with the Goa Cricket Association supporting. And what would you like to say about this particular tournament, Advocates Cricket League, and the facilities that have been provided by GCA? First of all, good morning to everybody. Iftikhar Aga is our best friend, and we are always supporting for the Advocate tournament. Every year we are supporting. Our former president Vipul Phadke has supported very well for them. And
and we are also supporting them, and we will support them every year. I think today is both the semi-finals and tomorrow is the finals in the floodlight. We will be coming to see, especially the match, and I think best of luck for the today's team also and the evening team also, and best of luck for the finals. Thank you, sir. Thank you so much. Now, quickly, we'll have a photograph and then we'll move for the game.
of batting of Devanand Kurgaonkar. And Rahul said, as we know, he just waits with the right opportunity. And what a good combination right from the beginning. Left hand, right hand combination into the batting attack of United Brothers. One of the most breathtaking match for sure. And the most breathtaking catch of the wonderful tournament goes to Kyle Ticolo, who's just standing besides me, injured. But the tournament so far, and yes, the tournament is still not over yet. Until tomorrow evening, the big finals will be played under the floodlights on this very beautiful ground, GC Academy. The match will begin sharp at 6 p.m. The finals of Adequate Cricket League 2026 Season 7. Are you ready? And the captain holds the ball. Praveen Gawas from the pavilion end will be bowling to the left-hand batting sensation. Rahul Seth on the striking position, having a word with Devanand Kurgaonkar, and they are set to give a good partnership. Maybe that is exactly what we're going to see. But the bowlers have got absolutely different plan for sure. How to break this partnership and just put pressure on the United Brothers. We'll see which team executes their plan well on the ground. And here comes the very first ball. Let's play is the call. The first ball of the first semi-finals. Praveen Gawas to Rahul Seth. Watchful, nicely played away. Just directed the ball towards the deep third man region and gets off the mark with a single run. Rahul not really in a hurry to play big shots. Just trying to get the feel of the ball for sure. There comes the right-hander. Devanand Kurgaonkar taking his guard, marking his line. Ready to face the first delivery of his to the captain of Legal Titans. Praveen Gawas has got a big responsibility. But what a journey of Legal Titans. They were underdogs. Just a flick, the ball has gone past the wicket keeper. Will that travel? It looks like the ball will travel for sure. That is a wide and a boundary. A boundary coming up. Oh, right in the block hole, but beautifully played with a straight bat towards the covers. Good comeback by the bowler, the captain Praveen Gawas. Quick rectification on that error. The boss previous delivery was slightly away, way outside the leg stump. The ball just wanted to flick. The ball has gone past with the pace of the bowler. Oh, wonderful. He has done his homework for sure. Praveen Gawas knows they're up against one of the best team of the contest. The defending champions, United Brothers. And no margin for error. And the captain will have to lead the team with great examples, and that is exactly what he's doing. Oh, mix up a bit of a rise as well. Wonderful deliveries. Just giving a bit of a tough time there. But he is a cool customer. Devanand Kurgaonkar, he knows exactly how to get set. Once again, what a tournament this has been for Devanand Kurgaonkar. Every match that is gone, he has performed well with the bat. All right, in the block hole once again, but this time a single will be handy here after 4 deliveries. What a good tight line over, a lot of dot deliveries and a single here to Kurgaonkar to take the score up to 7 runs on the board. We've got a manual scorer Namesh Moraskar, who's keeping a track of each and every delivery. With Shailesh Naik, the digital scorer. The ball is up. Could be the first breakthrough. Oh, just puts it down. Dear. He was not in a good position, but
What an effort there by the fielder. Absolutely a whisker. Lady Luck smiles on the left-hander Rahul. Seth survives the last delivery of the first over. And what a miss this is for Legal Titans. After the completion of the very first over, the score is 8 runs on the board. On the bowling mark. A lawful toss, a little bit of bat on that, but finds the fielder. Oh, a fumble will allow a single here for the batters. Absolutely, it's going to be a pressure match for sure. A single, quite comfortable with that fumble by the field in the covers. Will take the score to 9 runs. What a good combination right from the beginning. Left hand, right hand working well. Always in advantage for the batters. Vedang, who's known to provide the first breakthrough. Lovely with the ball swinging away. This is one good reason why after winning the toss, Praveen Gawas opted to bowl first. Because a little bit of dampness on the crease will help get that swing to the bowlers. And picking up early wicket is exactly their game plan for sure. To that matter, by any captain fielding first. Oh, the ball kept low. Beautifully played away the covers. Another single here. Quite easy. And with the time, look at the combination, the coordination, the understanding between these two batters is working so well. The openers provides the great combination of batting left hand, right hand. And Rahul said just surviving one miscued shot. But he will have to make the most out of this life which he's got. Round the wicket, lovely drive, beautifully played away. And look at the timing, the swing, the strength, the placement. Blasted his way through the covers for the boundary. That's a cracking beauty for sure. Half volley and beautiful swing of the bat. Plentiful of bat on that, and the ball racing away towards the deep covers for another confident looking boundary. This is the first confident looking boundary by United Brothers. Of course, in the very first there's a wide and a boundary, but this will definitely boost the confidence level of Rahul Seth. Absolutely, what a batter that he is. A left-hand batting sensation. The true strength of United Brothers are the opening pair. And these two opener batter knows their responsibility. Always provides a good start to take the team's total to a massive target for sure. 160, 170, they might even take the score to 180. Without a doubt, with this kind of a start. Watchful, sensible. A slow one by the Vedang. Back of hand. Good mixing up of the deliveries. Keeping the line very straight. It's not an easy job to do by the bowler. But Vedang does it so easily. Same style, same action. Slightly a little bit of bat on that. Yes, is a call by Devanand. Another single here. Comfortable.
This is the beauty of the batters. They're keeping the momentum going. At least a single every delivery is what they want to contribute. I just wanted to have a word there, Vedang. And also that marks the end of the 2 overs 15 without a loss. United Brothers batting first. The captain once again on the bowling mark to begin the third over, Praveen Gawas. In last match, Legal Titans achieving the target of 157 runs in just 16.1. What a great piece of batting by Satyam. Lovely shot, picked up beautifully into the covers. And two fielders in pursuit of the ball. Good footwork, good teamwork there. Just managed to stop the ball. Thank you, Mama, for providing the information. Satyam and Sachit Mauska, who gave a good start for team. And then later on, it was contributed by the captain as well to achieve 157.16.1. That was a real challenge which Legal Titans achieved. And what a win that was, absolutely. Which went down the history. In the meantime, on the back foot, once again played beautifully, nice and straight down the ground. It's a boundary. Look at the power he's unleashing. Absolutely pure timing from Rahul Seth. Another boundary. Straight down the ground towards the long off. Realizing his mistake, maybe Praveen Gawas just putting slightly fuller on this occasion. Oh, nicely played away. To the point region, but finds the fielder there. Kishan Kanhaiya very quick on the ball. Another wonderful batter of Legal Titans. He too contributed in the run chase of 157 in 16.1. And that run chase went down in the history of ACL as one of the best run chase by Legal Titans. One century from Achit Sigwan, the captain of Loy's Challenges, of 116 runs of 57 deliveries. Lovely shot, picked up beautifully. It will be a challenging for the fielder to stop that ball. Another beauty this time from the right hander. Devanand Kurganka takes it to the deep gully region. Bit of room and the batters goes boom. That was absolutely a confident looking shot by Devan, the right hander. We have seen two boundaries from the left hander. Oh, another flashy shot, but there is a failure this time. It'll be just one. Just trying to make the good use of the power play overs. They're batting first. And what a good over. This is absolutely full of runs for the team United Brothers. Completion of 3 overs. 27.
So 12 runs conceded in the last over by Praveen Gawas. Score moves to 27 runs after the completion of 3 overs. Once again, a very good morning to everyone. Vedang once again on the bowling mark. The ball slightly going away, but marginally. Not really, but within the parameters. Vedang once again on the bowling mark to begin the fourth over. After 3.1, the score is 27. These two are still looking good. Left hand, right handers. Just chipped in. Waiting is a good call by Rahul. Said there is a fielder. Look at the calling is getting better. Taking care of his wicket as well as taking care of his partner as well. That was a good call, in fact. But Devanan said that could have been a single. So they just want to sort that doubt out, and that's the reason they had a word of advice to each other. This is what is so good of United Brothers. They're talking and sorting it out very quickly. Thick outside edge. Intentionally just guiding the ball towards the deep third man region, picking up a single. Keeping the momentum going, which is good. The team which keeps the momentum and the ratio is United Brothers. 3 overs done, 27. Going at the rate of almost 8.5 to 9 runs. Every over. 9 runs to be precise. Well bowled. Didn't quite get in his range. Leg by signal. Vedang just trying to mix up with those slow one, which is working well for him. Just trying to just break that rhythm of the batters. Because these two batters loves to play the pace and then on the half volley or lower full toss, bang. And that is the beauty of the 6 overs of the power play. Shot of length, the ball nicely being played, beautifully like exactly Sachin Tendulkar. The upper paddle. Exactly where the fielders are. There was a fielder, but Ford, fine leg. Nicely done. Yes, it's a call this time. Underarm. Should have been quicker, yes. Sachit Mauskar says, overarm throw should have been better. 34 runs after 4. Without a loss, United Brothers batting first. This. I just want to realize no good footwork. A quick delivery that was beaten on the pace.
but maybe not really ready for that delivery to face. But he knows exactly. He's got a game plan, and he's going according to that. Devanand Kurgaonkar taking his partner along. Rahul Seth. Every time they talk it out, they're sorting out very quickly anything that would harm this partnership. Nice instead, just a bit of a rise there, a quick jump to just play the game of the ball away for another single here, sensible. He's got that style, he's got that class, the grace, calm, cool as a cucumber. Reaches the line length early on, gets in a good position. And that's the style of Devanand Kurgaonkar. But Rahul Seth is also a perfect batter to send, especially in these power play overs. Anything that he can whack it away, absolutely no hesitation. He plays his stroke naturally. He's one batter that I've seen fearless, not two measures. When he goes full-fledged with full power, and pure timing is exactly what we see from him. Once again, rising up to the occasion, building up a solid partnership. Just a glide there, soft hands on the ball. Shri Tulsidas Shetty, Honorable Secretary Goa Cricket Association, was present during the toss ceremony of the first semi-finals. And this is the beauty of Educates Cricket League. Special guests are invited to spin the coin. And what a tournament this is turning out to be, one of the most prestigious. No match when it comes to ACL, all seasons. Swing of the bat, the ball after pitching just sharply turning away. He's a master of swing, Praveen Gawas. I can see the hard work this last 1 week or 8 days that he's put in the nets. Because Legal Titans knows this is going to be another challenge to outplay United Brothers. It's not easy at all. Oh, wonderful. On the back foot, just wanted to play it away. Maybe more of a pace that they were unable to read that line in length. But he will come out with something for sure. He will figure it out. And that is what is the speciality of Devanand Kurgaonkar. There it is. Nicely played away. On the back foot and just trying to play away twice. Got beaten with that a bit of a rise there on the delivery. A single here to sum up over number 5. And very good over by the captain, Praveen Gawas. Just 3 runs considered and score is 37 after the completion of 5 overs for the loss of no wicket. Change into one. Thank you, Mr. Nadeem Ahmed. Requesting the extra men of Legal Titans, please be in the commentary box. Extra men of Legal Titans, please be in the com box. Here's Satyam. Nicely swatted away, and that will go towards the boundary. Again, drifting onto
That's gone through as well. Will just be one down to the fielder at covers. Another single taken. Turning out to be a very good over this for the United brothers. I got already the 2 boundaries, extras as well. So certainly getting in that groove, and this being the last over of the power play, mandatory power play. Definitely they are eyeing a big total with all their wickets intact. Undercutting that one down to the fielder at short third. Another single achieved quite comfortably. Semi-final one between the Legal Titans and United Brothers. Of course, our double header today as we shift the focus towards the semi-final 2. That will be in the afternoon session, where the 18 juniors to take on Lawyer Challengers. Nicely played, straight to the fielder, and will just be one. Excellent throw as well. Single to end the over after completion of 6. It's 49 without loss. 49 without loss after completion of the power play. The semi-final one's first innings. 49 without loss. The defending champions United Brothers against the Legal Titans.
In case if you are injured, in case you are having any niggle or feeling uneasy, then we have Chaitanya Kesarkar, a physio for this particular game, and also the medical partners, the Primary Health Center, Saligaon, Dr. Samesh Sheth, the medical officer. Nicely played, but straight to the fielder. Coming back to the Primary Health Center, Saligaon, Dr. Samesh Sheth, officer, nurse Sumidnya Salgaonkar, and MTS. We have Sandesh Naik. So if you are having any kind of niggle, feeling uneasy, then the medical team will take care of you. Already got their setup as well. Got a nice creative bed as well they created. Jokes apart, coming back live for the Advocates Premier League with that single 50 up, 50-run partnership between these two for the opening wicket. 7th over in progress as Maekar has come on from the media box end. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Some terrific graphics that are on display from the Photosonic Productions. Full toss, but just dipping on the batsman at the last occasion. Will get one, looking for the second, but sent back. Excellent return from the deep. Just a single taken. In the air, and again will just get one. These two will try and solidify the innings now. Has already 50 done with the first 6 overs. Will try and get as many as possible for that first wicket. And someone from these two will try and anchor the innings to get a big score. Some problems with the ball, might have split the webbing or something. The leather.
Up in the air. And that will go the distance. This time again, much quicker that time. Looking for the second. And will make it quite comfortably. Excellent running between the wickets by these two. Knows exactly what they are doing. And very well know that the fielders on the boundary rope won't reach. Took the first one hard and completed the second. After completion of 7, it's 60 without loss. 60 without loss after completion of 7 overs. Change in bowling as Prasad from the media box end. Nicely played. Swatted away down the ground. Will get one. Single achieved. Score moves on to 61. As after completion of the 10th over, Nadeem Ahmed will also join me again in the commentary. We'll definitely ask him which is the team that he is banking on to reach the finals. We'll have the chat later on. That's down the leg side. That will be wide. Extras. Officials in the middle. Vijay Kumar Reddy and Abrar Khan. With very experienced umpires. Again, that will be another wide. And that will it be cut off? Yes, indeed. Wide and 2 more runs added. In total 3. Just drifting down the leg side. Maybe change of angle will work. And now coming from round the stumps. Prasad. Oh, that one went in quickly. Skidded across. No chance. That's where you gotta be. On the off stump, middle and off, maybe just away. Short delivery, and this time much wider. Now the bowler. Another single taken. These two look in some supreme touch right now for the United Brothers. A solid partnership this for the opening stand. And haven't looked in any sort of concern by the bowlers of the Titans. Short delivery and missed out. It's wide. Would have been cursing himself that he missed out on a freebie. Short delivery
Very late to arrive. Up in the air. Fielder. A couple of bounces into his hands. Looking for the second hesitation. And rightly so. Kishan with that throw. Just one. Really good call by both the batters not to take that second. Up in the air. Fielder getting underneath. And that's put down. Oh, again. The second catch that has been put down. And again, the left-hander gets away with one. And down the leg side, that will be another wide. Turning out to be very lengthy over this. Just that when you drift away, it becomes difficult for the keeper as well to collect the ball. But Mauskar is very quick. Again, swing and missed. Dot delivery to end the over. Completion of the 8th. It's Shivan Devkar to continue. Up in the air. Fielder this time. Has he came in quickly? Yes, he has. And that's gone for 4. Oh, again, the wheels are falling off. Short delivery with straight to the fielder at short extra cover. Another dot ball. They're getting the boundaries at will with the help of the fielders. Up in the air. Again, falling short. Will just be one. Another single taken. Got the boundary at the first, then a single now achieved. Belted down the ground. Couple of bounces into the hands of the fielder. Another single taken. This partnership is currently growing and growing with a rapid pace. Just about 6 to 7 runs per over.
It will be a good launching pad for the batsmen to follow, as they have some terrific batters to come. Nicely played. Will get one down to Kanaya. Another single taken. I'm talking about the batsmen to follow. Two Dattarajas, also Raghu, and have got some firepower. The defending champions, United Brothers. Any team, after winning the toss, deciding to bowl first would require wickets, but the Titans haven't got any. Swing and a miss. Dot delivery to end the over after completion of short delivery. Help yourself kind of a delivery. But on the bounce to the fielder at deep back to the square. Kanaya picks it up, throws it back. Another single taken. These two complementing each other. Devanan as well as Harsh. Oh, good delivery, very full. Well, he might have heard it from the dressing room to take it on the bowler. But the bowler is also smart enough to bowl him full and not to allow him to go after him. This time he goes over the top. And the fielder again put down. Well. 4 catches have been put down by the fielder of Titans. And thrice they have put down Rahul Seth. Vedang this time with that chance going down. Spooned up in the air. Had all the time in the world to be underneath and take that catch. But it's been dropped yet again. Again, just might have been drifting down the leg. And now the dot delivery. That's wide, extras. Helping the cause. Just that when you don't have any wickets, the same batsman you're bowling, you try to do some different things and end up giving too many extras. Looking for the second, but no. Just one. Another single taken. Our physio, Dr. Chaitanya Kesarkar, is having a lot of cold.
Hope she doesn't give us any. Again brings Rahul back on strike. Down the ground. And looks like it will clear the man quite comfortably. Mere spectator that way. Please get back. Won't be any drinks. Drinks earlier given. So please, won't be any drinks so that we can continue. Officials will let you know that whenever those drinks are needed to be taken, you can take the drinks. Okay, now if the, yes, called by the officials to take the drinks, as the keeper is swapping his pads. After completion of 10 overs, it's 88. Let's 88. Sorted away. Down to the fielder. And looking for the second chance. No, not quite. Bit wavered through that. Score moves on to 90. Nadeem sir, this partnership is building and building with a rapid pace right now, as 90 without loss looks very ominous signs as far as the men in dark blue are concerned. धन्यवाद शाह। तो बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस साझेदारी की, जिस प्रकार से देवानंद कोरगांवकर और राहुल सेठ के बीच एक दमदार साझेदारी। तो तभी तो मैंने पहले भी कहा था शाम की, अगर साझेदारियों की बात की जाए तो यूनाइटेड ब्रदर्स का कोई मुकाबला नहीं। जिस प्रकार से पहली ओवर से लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल लाजवाब देवानंद कोरगांवकर।
सीधे हाथ के बल्लेबाज, जबकि बाएं हाथ के राहुल सेठ जमकर बल्लेबाजी करते हुए। तो क्या बेहतरीन साझेदारी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरपूर, हर एक गेंदबाज को बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम होकर सुंदर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। शानदार योगदान उनका, इक्का दुक्का रन के साथ मौके की तलाश में, और राहुल सेठ के बल्ले से लगता हुआ इस सेमीफाइनल का पहला छक्का भी बिल्कुल काबिल तारीफ। इसे बीच हल्की सी दिशाहीन गेंद होते हुए सचित माउस्कर विकेट कीपर थे, गेंदबाजी में आ गए हैं। और बिल्कुल ये एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें मैं कहूंगा एक योद्धा खिलाड़ी, सचित माउस्कर। कभी विकेट कीपर लगता है, कभी गेंदबाज, कभी बल्लेबाज, तो कभी फील्डर। जिस भी भूमिका में आप इसे आजमा लो, बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपको दिखाई देगा इस मैदान पर। फिर से एक बार बिल्कुल खेला गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, जहां पर स्वयं कप्तान तैनात प्रवीण कावस ने पूरी कोशिश की, अपने धुरंधर से धुरंधर गेंदबाजों को गेंदबाजी में लगाया, मगर उसके बावजूद जिसे कहते हैं रॉक सॉलिड डिफेंसिव टेक्निक इन दोनों ही बल्लेबाजों में शामिल। अब तक इनकी सुरक्षा को भेद नहीं कर पाए कोई भी गेंदबाज लीगल टाइटंस का। ओ बिल्कुल इस बार पहले की दिशा की ओर गेंद को डायरेक्शन दिया है, वहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। साथ बिल्कुल इनकी बल्लेबाजी देखकर एक शेर मेरे जहन में आता हुआ देवानंद कोरगांवकर के लिए, बिल्कुल हिम्मत अफजाई वाला ये शेर। फिर से एक बार उसी दिशा की ओर, मगर इस बार शायद गेंद को रोका जाएगा। तो देवानंद जी, इट्स फॉर यू। आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं एक बल्लेबाज हूं, मैं एक बल्लेबाज हूं, गेंदबाजों से क्या डरना। बिल्कुल निडर होकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल 11 ओवरों की समाप्ति, 97 रन बिना किसी नुकसान के यूनाइटेड ब्रदर्स। Talked about that sher, or you can say ghazal of in Hindi, about fire, shairi in fire. Currently, these two batsmen have put water on the close, and that's gone for 4 with that 100 partnership between these two. गारों से क्या ही डरना, बेहतरीन बल्लेबाजी देवानंद कोरगांवकर की। फिर से एक बार गेंद को दिशा दी, मगर सुंदर फील्डिंग तारीफ करनी होगी। इसे कहते हैं सचित माउस्कर। जिस प्रकार से मैंने कहा कि इस खिलाड़ी को जिस भी भूमिका में आप आजमा लो, आपको उभर कर नजर आएगा ये खिलाड़ी। नाम है सचित माउस्कर, 16 का डोला, 46 की छाती है इनकी। जब बल्लेबाजी भी करते हैं बिल्कुल कमाल की। तो बिल्कुल 100 रन का आंकड़ा पार करती हुई टीम, और राहुल सेठ कुछ रिवर्स करने की योजना बनाते हुए फिलहाल स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बिल्कुल एक दिग्गज बल्लेबाज। बैकफुट पर इस बार बढ़िया शॉट, फिर से एक बार वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पार। तो इसी बीच हल्की सी दिशाहीन गेंद होती हुई, मगर देखिए राहुल सेठ की खासियत यह है कि जब बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो राहुल द्रविड़ की तरह धीमी गति से शुरुआत, वाइड का इशारा,
मगर जब जम जाते हैं तो केएल राहुल की तरह बल्लेबाजी करते हैं। शाम, तारीफ करनी होगी बाएं हाथ के बल्लेबाज की भी, जिस प्रकार से सपोर्ट के साथ, जिस प्रकार से इक्का दुक्का रन के साथ बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी उनकी। Yes, definitely. Talked about both the Rahuls. They do come from Bengaluru. That's down the leg side. That will be another wide. Too many extras. And then, so if you look at this bowling performance of the Titans, have dropped 5 catches. That could be in the back of their mind, where they have dropped 5 catches, and those chances, if were taken properly, would have been some different story. Another wide in that time. What is your take on that drop chances that have been put down by the fielders of Titans? बिल्कुल शाम, कैचेस विन द मैचेस एक कहावत है। अगर 5 कैचेस छोड़ते हैं तो बिल्कुल मौका मिलता है बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करने का, और वही दिखाई देता हुआ फिलहाल मैदान पर। पटकी हुई गेंद, इस बार हाथ खोल दिया है, फिर से एक बार डीप स्क्वेयर की दिशा की ओर, मगर सुंदर फील्डिंग वहां पर किशन कन्हैया की। अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। मगर फिर से एक बार मैं मेडिकल पार्टनर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालीगांव से आए हैं डॉक्टर शमेश सेठ, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ सिस्टर सर्वज्ञ सलगांवकर और एमटीएस संदेश नाइक साहब, सभी यहां पर मौजूद। उनके साथ चैतन्य केसरकर, फिजियोथेरेपिस्ट भी यहां पर उपस्थित हैं। तो बिल्कुल बड़ा शॉट हाथ खोल दिया है और खत्म, बाय बाय। सैंतालीस पर तो बिल्कुल बल्लेबाजी ऐसी आ देखे जरा किसमें कितना है दम, दमखम की बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। राहुल सेठ स्ट्राइक पर, फिलहाल कलाइयों के साथ खेल दिया। इस बार 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। अगर क्लीन पिकअप होती, थ्रो होती, निश्चित तौर पर देवानंद मुश्किलों में आ सकते थे, मगर लेग बाय का इशारा आता हुआ विजय कुमार रेड्डी की ओर से। उनके साथ अबरार खान, फिर से एक बार ओवर की समाप्ति होती हुई 12 ओवर समाप्त, स्कोर 118। मगर इस मैच में किस टीम के बजेंगे 12, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल शाम पांच कैसे छोड़ना, यानी कि बिल्कुल ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लीगल टाइटन जो टीम, मैं तो कहूंगा एक फाइटिंग टीम, जिस प्रकार से उन्होंने 157 रन केवल 16 एक गेंद में प्राप्त किए, और उस टीम के लिए कैच ड्रॉप करना बिल्कुल एक थोड़ा सा निराशाजनक बिल्कुल रहेगा। तो फिलहाल 13 ओवर की समाप्ति और गेंदबाजी में फिर से एक बार बदलाव किया गया है, वेदांग को लाया गया है गेंदबाजी क्रम में। तो देखना होगा क्या वेदांग पहली विकेट की सफलता दिलाएंगे अपनी टीम लीगल टाइटंस के लिए। पटकी हुई गेंद, इस बार बिल्कुल हल्के से बल्ले का मिलाव हुआ, मगर परवीन गावस को पाया अपनी गेंद की राह में, और 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल राहुल 48 पर पहुंच चुके हैं, 48 रन अपनी निजी स्कोर। तो मुझे तो लगता है कि दोनों ही बल्लेबाज 50-50 रन बनाकर एक क्या बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं यूनाइटेड ब्रदर्स के लिए। पहली सेमीफाइनल का मुकाबला, बिल्कुल टॉस हारा यूनाइटेड ब्रदर्स, मगर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ रही है
जिस प्रकार से शाम आपने भी कहा कि 180 190 आसानी के साथ, मुझे तो लगता है कि 200 का आंकड़ा भी टीम पार कर जाएगी आज पहले सेमीफाइनल्स में। फिलहाल वेदांग की गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद पर हल्के से दिशा दी, सॉफ्ट हैंड से खेला, नजाकत भरे अंदाज से जिसे कहते हैं शाम। Yeah, currently these two are not finding any trouble by the bowlers of Titans. And the bowlers of Titans look a bit wearied down, drop chances, and also this terrific batting by these two openers of the brothers. फिलहाल पहले विकेट की सफलता, जिस प्रकार से मैंने कहा कि अनुमान लगाया था कि वेदांग होगा वो गेंदबाज जो दिलाएगा पहले विकेट की सफलता। ये लो, राहुल सेठ को किया आउट और अपने 50 बनाने से रह गए, मगर क्या ही शानदार दमदार पारी खेली है राहुल सेठ ने और अपनी निजी 48 पर आउट हुए हैं राहुल सेठ, मगर टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दी। 32 Well, I would say it would be a commentator's curse, Mr. Nadeem Ahmed, as you are praising him so well. He was batting on 48. You wouldn't have told him the score. He would have been batting like that only. शाम मैं कभी किसी को दुआ बिल्कुल नहीं देता, मैं हमेशा दुआएं देता हूं, मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। 48 पे राहुल सेठ को आउट होना था और वेदांग की गेंदबाजी पर और आउट हो चुके हैं, क्योंकि तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है। फिलहाल कुछ खुशियां मनाने का बिल्कुल मौका यहां पर लीगल टाइटंस के लिए, और इस मजबूत जोड़ी को आखिरकार तोड़ने में कामयाबी दिलाते हुए वेदांग, जिनसे उम्मीद लगाई गई थी कि पहले विकेट की सफलता अक्सर हमेशा अपनी टीम के लिए देते हैं, वो है वेदांग। देर आए सही मगर दुरुस्त आए हैं गेंदबाज। तो फिलहाल देखना होगा कि अब 1 डाउन पर कौन सा बल्लेबाज जो कि मैदान पर उतरा है। दत्तराज गावस विकेट कीपर बल्लेबाज, एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक शानदार बल्लेबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल एक मौका जरूर मिला है शाम, गेंदबाजों को एक उम्मीद मिली है, और क्या उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे और ज्यादा विकेटें लेने की संभावना बिल्कुल यहां पर बनी है। Sometimes we can say that one brings two, two brings three. Is that the opening of the wickets that will be coming next? Are the bowlers trying to tighten the screws now? Has already lost the wicket as Rahul Sheth is welcomed by his teammates in the dressing room with a big thunderous round of applause. Tattaraj, the new man in, will not be easy for him to get on with the game straight away. First wicket down, and to come in next, we've been sitting for long as this mammoth 100-run partnership has completely might have breath easy for them. बिल्कुल काफी लंबे समय बाद उनका मौका मिला है बल्लेबाजी का, तो फिलहाल इक्का दुक्का रन के साथ जमेंगे। जिस प्रकार से राहुल सेठ की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर तालियों की गड़गड़ाहट, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता हुआ उस बल्लेबाज को जिन्होंने 48 रनों की पारी खेली केवल 32 गेंदों में, मगर तारीफ करनी होगी क्या शानदार शुरुआत दी, वो काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी में। फिलहाल वेदांग लगातार बिल्कुल विकेट विकेट गेंदबाजी करते हुए, मगर फिलहाल फिर से एक बार एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मगर देवानंद गुरगांव मुझे तो लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा ही है, चलता जाएगा बिना थके बिना हारे। तो देवानंद गुरगांव पर मैं तो कहूंगा कि ये टीम के मिस्टर रिलायबल हैं, टीम उनकी एबिलिटी पर, उनकी बल्लेबाजी पर पूरी तरह से निर्भर है। तो मुझे लगता है यहां पर बिल्कुल हमारी फिजियो मैडम की जरूरत पड़ेगी।
स्ट्राइक पर देवानंद, बैकफुट पर कट कर दिया इस बार, डीप क्रॉस की दिशा की ओर, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए देवानंद कोरगांवकर के लिए फिर से एक बार अपनी बल्लेबाजी का परचम लहराया और बल्ला बिल्कुल हवा में लहराता हुआ फिर से एक बार शानदार पारी खेली है। 50 रन पूरे होते हुए देवानंद कोरगांवकर के लिए, तो तभी तो मिस्टर रिलायबल का लकब इस खिलाड़ी ने पाया है अपनी टीम यूनाइटेड ब्रदर्स के, एक बेहतरीन बल्लेबाज। ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। बैकफुट पर बिल्कुल संभल कर हल्का से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, अपनी गेंदबाजी पर तुरंत दौड़े और देखिए बिल्कुल अपने 100% कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं सचित माउस्कर। 16 का डोला, 46 की छाती। जब बल्लेबाजी करते हैं तो सभी कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जैसी बल्लेबाजी उनकी, और जब गेंदबाजी करते हैं तो युजवेंद्र चहल, इन्हें तो आईपीएल में होना चाहिए। बेहतरीन खिलाड़ी सचित। गेंद हवा में, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी तैनात, किशन कन्हैया के सर के ऊपर से गेंद निकली है। अंडर 25 टीम हल्की सी दिशा, इन गेंद वाइड का इशारा, बिल्कुल इशारा आता हुआ विजय कुमार रेड्डी की ओर से अतिरिक्त का। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे से 131 पर, बिल्कुल अभी भी वही जोश, वही टाइमिंग, वही ताकत, वही नजाकत, वही सुंदर बल्लेबाजी देवानंद कोरगांवकर की ओर से। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी मैदान पर उतरे हैं ये बल्लेबाज, बिल्कुल थकता ही नहीं। किस चीज से बना है ये बल्लेबाज? नाम है देवानंद कोरगांवकर। मुझे तो लगता है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बना है देवानंद कोरगांवकर, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी। और इसी बीच क्रॉस की दिशा की ओर गेंद खेला गया, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग। जब तक गेंद को थ्रो करते एक और रन का इजाफा, धीरे धीरे इक्का दुक्का रन के साथ कुछ बड़े शॉट भी देखने को मिलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 134 रनों पर। तहे दिल से धन्यवाद गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का, जो इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, जैसे कि कहा ऑनरेबल सेक्रेटरी ने। और इसी बीच फिर से एक बार गेंद को हवा में वहां पर देखते 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 रह गए, और फिर से अगर देवानंद ने मन बना लिया है कि मैं अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे तो चलना है जी, बढ़ते हुए कदम उनके, मगर क्या ही योगदान उनका। बिल्कुल जब वो आना चाह रहे थे बिल्कुल आ चुके हैं। कर तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंडिंग ओवेशन बिल्कुल बनता है इस दिग्गज बल्लेबाज के लिए।
में कभी हिंदी में मेरे साथ शाहपुरा से श्याम कलंगुटकर कॉम्बॉक्स में मौजूद। तो बिल्कुल मुझे तो लग रहा था कि बल्लेबाज एक मिशन पर थे और अपना मिशन पूरा करते हुए राहुल सेठ 48 पर 32 गेंदों का सामना कर आउट हुए और नाबाद रिटायर्ड आउट वापस लौटे देवानंद कोरगांवकर 58 रन बनाकर 58। जीवन देवकर गेंदबाजी में हल्की सी दिशाहीन गेंद और बिल्कुल शाहरुख खान की भूमिका में अबरार खान, वाइड का इशारा। स्कोर इस वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 141। बैकफुट बिल्कुल बढ़िया शॉट, मगर वहां पर कोशिश रहेगी गेंद को रोकने की। प्रवीण गावस कप्तान टीम के लीगल टाइट्स, मगर जब तक गेंद को लौटाते 2 रन आसानी के साथ बटोरते हुए सुंदर रनिंग का मुजाहरा। दत्ताराज गावस, दत्ताराज परब, दोनों दत्ताराज अब क्रीज पर। कट कर दिया इस बार, स्क्वायर कट, बिल्कुल फील्डर को पाया और फिर से एक बार 2 रन का यहां पर रहेगी दरकार बल्लेबाजों के लिए। तो देखिए ये साझेदारी, ये कॉम्बिनेशन, ये बैटिंग लाइनअप यूनाइटेड ब्रदर्स को एक मजबूत टीम बनाता है। जिस प्रकार से ओपनिंग पार्टनरशिप ने बिल्कुल लाजवाब अपने परफॉर्मेंस से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। देवानंद कोरगांवकर 58 रन और 48 रन बनाकर आउट हुए राहुल सेठ। क्या बेहतरीन साझेदारी। और अब दत्ताराज परब, दत्ताराज गावस का भी योगदान आपको देखने को मिलता हुआ। हर एक गेंद पर 2-2 रन। बढ़िया शॉट, मगर वहां पर गेंद को रोका जाएगा मिडफील्ड की दिशा की ओर और 1 रन का इजाफा। अपनी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जाना जाता है, नाम है जीवन देवकर। कभी 2-3 विकेट हर एक इनिंग में लेना इनकी खासियत। और इस बार शायद इनके मन में था कि मन कट करा दें, बिल्कुल यहां पर हार्ट अटैक दे दिया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को। पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार यहां पर कैच का मौका किशन कन्हैया ने ले लिया है। जीवन देवकर को मिलता हुआ पहले विकेट की सफलता, यानी कि तीसरा विकेट गिरता हुआ यूनाइटेड ब्रदर्स। मिडविकेट की दिशा की ओर और दत्ताराज गावस को आउट करते हुए तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। जब साझेदारी चली, लंबी साझेदारी, अब विकेट गिरने शुरू हो गए हैं तो लगातार विकेटें भी गिर रहे हैं। तो बिल्कुल यही करिश्मा जो कि इस क्रिकेट को और भी दिलचस्प बनाता हुआ। जीवन देवकर, जैसे मैंने कहा कि 2-3 विकेट लेना इनकी खासियत। पहली विकेट तो फिलहाल ले चुके हैं। रघुनाथ परब, दत्ताराज परब नौ स्ट्राइकर एंड पर, रघुनाथ परब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। तो देखना होगा कि परब जोड़ी क्या कर गुजरती है बल्लेबाजी में। बैकफुट पर कट कर दिया इस बार, मगर फिर से हल्की सी उछाल भरी गेंद, सही लाइन सही लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए जीवन देवकर। रघुनाथ परब की तारीफ करनी होगी, एक कंप्लीट पैकेज T20 के यूनाइटेड ब्रदर्स। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, फील्डिंग में महारत हासिल इस खिलाड़ी को।
फिलहाल गेंद हवा में, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, शायद गेंद को रोका जाएगा। केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। 1 रन के साथ उसको धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 145, अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ। 15 ओवर समाप्त, और 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 145, 3 विकेट के नुकसान पर। Rangers, Sherwin Shaw, Ethernet Express, Priority Constructions, Mustafa Collections, Bale Resorts, Prescon Homes Private Limited, Chirag Datta Naik Initiatives, Manas Developers, Confiteria, 31st January, Aviation Infra, Felicity Group, Real Drinks, Hype, Advalpalkar Constructions. Big thank you and big compliments from Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlika, Advocate S.N. Joshi, Advocate M.S. Joshi, Mr. Lalji Daboya, Mr. Viraj Paras, Mr. Balkrishna Hodakar, Alois Pinti, Mr. Sandesh Amonkar, Mr. Iqbal Moideen, Mr. Prasad Seth, and Mr. Vijay Patil. Big thank you for supporting this wonderful tournament, Advocates Cricket League, all seasons. तो बदलाव यहां पर कॉम बॉक्स में रहेगा। शाम कलंगुटकर आपको आंखों देखा हाल इस मैच का अंग्रेजी में अब तक पहुंचाएंगे। Thank you, Mr. Nadeem Ahmed. Sachit Mauskar has come on from the media box end. 145 for the loss of 3 wickets. Last 5 overs in this game, in this particular first semi-final. First innings that's been played nicely down the ground. Can they come back for the second? Yes, they are coming back for the second. Chance of a run out? No, not quite. 2 more runs taken quite comfortably. Score moves on to 147 now. Well, these two brothers, for the United brothers, are very swift runners. You just don't often carved away, nicely played. Good work. And the field that covers Mr. Jeevan Dukar, the field down there. I thought, in fact, just a single achieved on that one. Again, nicely adjusted on that one. Had some bounce on it, played it late onto the field at a point. Another single. Cut away. Will be another single. Another single taken. We'll be finding the boundaries now and try and accelerate these two. Not just the singles and doubles. These two very sleek and have got the long handle to use in this back end of the innings, death overs. Nicely played off the back foot. And again, some good work. Looking for the second. And we'll get there quite comfortably. Another couple of runs. 16 overs done. It's 154 for 3. में मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, बिल्कुल अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए। शाम क्या कहना चाहोगे इन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं नेट्स में, इस खूबसूरत मैदान के? Well, Mr. Nadeem Ahmed, I'm still a kid. Should I go to the saloon and just shave off my beard and mustache?
so that I also will be looking like a young kid practicing with them. Swing and a miss. Looking for the big hit. Is on the extreme right. Those are the under 23 players headed by coach Avadut Amodkar and trainer Ninad Pavaskar. Whereas the man exactly diagonal sitting to me is Robin D'Souza for the under 19 coach. Again, trying to accelerate. Oh, gone. Yes, definitely. Was trying to up the ante. हर एक मैच में 2 से 3 विकेट लेना इनकी खासियत। फिलहाल शाम 2 विकेट ले चुके हैं, शायद तीसरा विकेट भी जल्द ही ले ले। तो यह खासियत, जैसे कि आपने भी कहा कि एक मैजिशियन, एक जादूगर, जबकि बल्लेबाज 120, 125, कभी कभार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी का सामना करना जानते हैं, मगर जैसे ही देखते हैं कि जीवन दिवकर की गेंदबाजी 45 से कभी कभार 47, 50 तक इनकी पेस, तो वहां पर उनका रिदम बिल्कुल मात खा जाता है और विकेट की सफलता मिलती हुई जीवन दिवकर को। Yes. New man in Coben Franco. Nicely played, watchfully played, and will get the single quite comfortably. Gets off the mark with that single. And these two now will definitely try and get those big hits. Coben Franco, tall, heavily built. Can up the ante. Can we see him fire in this big semi-final one against the Titans? Blasted down the ground. Down to Sachit. Mauskar will just be one. Another single taken. Just that Divkar hasn't tried to fire it in. There again, bowling it very slow. Just guided nicely. Another single taken. Again, swing and missed. And how did that miss the stumps? Done with you as well. It's 157 for 4. The United Brothers.
3 more overs remaining. Final 3 overs. Are they looking to get at least around 180, 190? What we had discussed earlier. Fast off spin. Swing and a miss. In fact, that will be wide. Extras. Just that the medical team has got shifted towards the other end of the ground. Swing again, missed again. Shy the stumps again, missed. Bye is given. The primary health center, Saligaon. Entire team of the primary health center, Saligaon, just being shifted there towards the other end of the ground. Swatted. And the fielder will watch it sail over. Down the leg side, and that will be 4 more. Well, again, Sai up this time. Just getting some bit of bad on that one. Drifting onto the pads and quickly guided. Maximum followed by a boundary. Score moves on to 169 with those 10 runs in 2 deliveries. Blasted again down the ground. Oh, he has given up the chase. That went like a tracer bullet. Quickly, and the skipper is just fetching the ball from the boundary. 173. And they are certainly looking at 190, 200 now, the United brothers. This time wide. 174. Very calm, collective picture of Mama. He's very calm now. Calm before the storm. As when his team will be on the park to defend those runs, he will be exaggerated, animated, as he should be. We saw him in Chikalim behind his team all the time. Not getting the mid of the blade, looking for the second. Kanaya onto it. And that's another double. Very risky, that one. 2 more runs taken. Can Sai finish off this over with a boundary or maximum? Or does Vedang finish it off well? Outside edge. And that will be a boundary. No chance for that fielder. Gone for 4. 23 runs coming from that over. After completion of 18, it's 180 for 4.
180 for 4 after completion of 18 overs. 2 more overs remaining in this batting of United Brothers. Skipper Praveen Gauss from the far end, from the media box end. 180 for the loss of 4 wickets. Final 2 overs remaining. Last 12 deliveries. Coburn Franco yet to get that big hit that he is usually known for. Meanwhile, his partner is on a different role right now. Slower delivery. In fact, that's a wide away from the reach of the batsman. It's wide of him. $181. Flat batted. And the fielder is a mere spectator yet again. Cross batted. Heave. Over the top. Over the long offside for a maximum. That was one struck powerfully. Nothing wrong on that delivery. But the power of that man, just like the man who is exactly opposite to him, sitting and watching the game, Robin D'Souza. That one might have just gone away. Yes, indeed, wide. More extras. Very muscular, very powerful. Coburn Franco plays a lot of tennis ball cricket whenever he gets time to, from the Bodgeshwar Girim. And being a lawyer, also participating in the Advocates Cricket League. Again, swatted down the ground. Fielder again gone through him. Another 6. Two maximums. 1 over long off. 1 straight as an arrow towards the side screen. This time not finding the meat of the blade, but will pick up 1. Are they looking for the second? No. Just 1. 195. Still 1 more to go after this. Well, a mammoth total on the scorecard. Well, Praveen Gauss at the toss said 150, 160 would be a good total that they can try and achieve. Again, what a hit that is. And no chance for the field. .200 being scored. Full toss. Down the ground this time. And will get 1. And with that, that single gives 200 for the United Brothers. Well, the defending champions are playing like the champions. 200 in the first semi-final against
Very uneasy kind of a team which have dropped too many chances. They have themselves to blame for the drop chances. Swatted away. Not getting the mid of the blade again. Coben Franco will pick up one. 201 for the loss of 4. United Brothers. 21 came from that over of skipper Praveen Gauss. So very expensive that over. Last over coming up in this innings of United Brothers. Mausker to bowl the final over. 201 for the loss of 4 wickets. That's a mountain of a scorecard. Runs that have been put by the United Brothers. Will definitely have to bed out their skin, the Titans, to achieve that target. Don't know what going to set. 201, 6 balls remaining in the innings. This time down the leg side, trying to pull that one, missed out. Will get one in form of leg buys. 202. Up in the air. Fielder gone over him. Looking for the second. And will achieve it quite comfortably. 2 more runs taken. Well, the field settings as well as the fielding aspect, which is a very important aspect of the game, was not really served by the Titans today. Courtesy of some really good batting by the openers of the United Brothers. Again, cleared the man in the vacant region and will get 2 more quite comfortably. Rahul Sheth and Devanand Kurgaonkar with some terrific batting at the beginning. 48 and 57 apiece to them. Set the tone at the beginning. 119-20 odd partnership between them, which set the tone for the rest of the batters to come in and play this risk-free cricket. Gone for 6. Flat as a tank. Another hit. $212. Final 2 deliveries. United Brothers. Shimmer down the wicket. And the fielder, put down. That has been the 6th catch which has been put down. And will be out. Coben Franco at the non-striking end. Wasn't ready to come towards the non-striking end, but will have to head back on the last delivery. Still 1 delivery remaining as Shomi Kangle will walk in to be at the non-striking end.
213 for 5. Final delivery of the innings. Short delivery, flat batted, powerfully struck. Looking for the second. Shomik Hangle. Can he get towards the non-striking end and safely does his partner as well?
तो आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। दूसरी इनिंग की शुरुआत और गेंदबाज पूरी तरह से तैयार। पहली गेंद कुछ ही लम्हों में आने वाली है और गेंदबाजी में आए हैं दत्तराज परब, लंबे ऊंचे कद के बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाज जिन पर टीम निर्भर करती है अपनी अच्छी गेंदबाजी पर। यूनाइटेड ब्रदर्स अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक ऐसी टीम जो पूरे डिपार्टमेंट में एक मजबूती, बल्लेबाजी में आप देख सकते हैं 200 के पार, गेंदबाजी अच्छी, फील्डिंग अच्छी, तभी तो बनाते हैं यूनाइटेड ब्रदर्स को इस श्रृंखला की सबसे मजबूत टीम। उनका सामना करेंगे लीगल टाइटंस और पहली गेंद। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट बॉल पटकी हुई गेंद, बिल्कुल कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल किया, वहां पर फील्डर को पाया, कोई रन का मौका नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या हम सत्यम की सुंदर बल्लेबाजी देखेंगे? क्योंकि अब बिल्कुल टीम को दरकार है कि कुछ बल्लेबाजी अच्छी हो सत्यम की ओर से। हमेशा लगातार अपनी टीम के लिए बेहतरीन रनों से अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया सत्यम ने इस टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट उनके लिए काफी बेहतरीन रहा और सचिन माउस का नॉन स्ट्राइकर इन पर। पटकी विकेट फिर से एक बार संभल कर पूरे बल्ले के साथ, कोई रूम नहीं इस बार, बिल्कुल मुश्किलों में आ गए थे सचिन माउस को। रहा नहा होता इसी बीच, जब तक थ्रो आता पहुंच चुके थे अपनी क्रीज पर सुरक्षित। कोई खतरा, फिलहाल खतरा तो टल चुका है, मगर यह एक अच्छी साझेदारी के साथ, बिल्कुल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। तो फिलहाल लगातार सही लाइन सही लेन पर गेंदबाजी करते हुए दत्तराज। पटकी हुई गेंद, बिल्कुल फिर से एक बार सीधे बल्ले। देखिए जब तक कोई रूम नहीं रहता बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में दिक्कत पेश आती है, और इसी को ध्यान में रखकर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी। तो बिल्कुल अपना होमवर्क कितने बेहतरीन, कितनी खूबी के साथ करके आए हैं गेंदबाज। जानते हैं कि थोड़ा सा अगर एडवांटेज देंगे बल्लेबाजों को तो बिल्कुल पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों में क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। हाफ वॉली, जूसी फुल टॉस या फिर फुल टॉस पर बिल्कुल कड़ा प्रहार करेंगे बल्लेबाज। कट के थे इस बार, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब तक कुबन फ्रैंक को गेंद को उठाकर थ्रो करते, एक रन आसानी के साथ फिर से एक बार बढ़ोते हुए और अपना तो दोनों ही बल्लेबाजों एक एक रन निकालकर अपना खाता खोल चुके हैं। जानते हैं कि जिम्मेदारी है दोनों ही बल्लेबाजों कम से कम अर्धशतक की पारी खेलनी होगी, जिस प्रकार से देवानंद और राहुल ने खेली थी। क्या खेल पाएंगे? एक अच्छी शुरुआत की दरकार रहेगी लीगल टाइटंस के लिए। हालांकि टॉस जीता था लीगल टाइटंस ने, पहले गेंदबाजी, मगर जिस प्रकार से गेंदबाजी रही कोई खास फायदा गेंदबाजों को बिल्कुल नहीं मिला। जब बात की जाए यूनाइटेड ब्रदर्स की बल्लेबाजी की, क्या शुरुआत, 58 का योगदान मिस्टर रिलायबल की ओर से देवानंद कुरगांवकर जो कि तैनात है शॉट फाइनल की दिशा में, और उनके बाद राहुल सेठ के 48 रनों का योगदान जो कि लाजवाब। आप देख सकते हैं अध्यक्ष एसीएल के एडवोकेट इफ्तिकार आगा, बिल्कुल एक हैंडसम डूड की तरह। इस मैच का जायजा लेते हुए और सभी बारीकियों पर ध्यान देते हुए बिल्कुल श्रेय जाता है द आर्किटेक्चर ऑफ एडवोकेट्स क्रिकेट लीग, एडवोकेट इफ्तिकार आगा। क्या भूमिका उनकी, बिल्कुल लाजवाब। जो प्रोफेशन होता है एडवोकेट्स का, काफी बिजी रहते हैं अपने केस मैटर्स में, उसके बावजूद इस प्रकार का बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आना एक अचीवमेंट, मैं तो कहूंगा एक उपलब्धि बिल्कुल इस टीम ने प्राप्त की है। इफ्तिकार आगा साहब के नेतृत्व में हल्की सी फील्डिंग में बदलाव और मिड विकेट पर शायद एक फील्डर को भेजा गया है। बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां पर आशीष देसाई बिल्कुल तैनात, अपनी सुंदर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। तो लगातार एक बेहतरीन ओवर, कोई चौका नहीं इस ओवर में, टाइट लाइन ओवर, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। एडवोकेट लुइस फर्नांडिस, एडवोकेट केतन मोरस्का, एडवोकेट उत्कर्ष सावंत, एडवोकेट सुफल कुट्टिका, एडवोकेट कुणाल
Kungolkar, Advocate Akshay Vengulekar, Kishore Chipiti, Apin, रेहान स्वास्तिका, बेहतरीन टीम. बिल्कुल इस टीम की तारीफ करनी बनती है. डेडिकेशन, पैशन फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट सभी कुछ इस टीम में दिखाई देता हुआ. वक्त पर आकर मैचों की शुरुआत और मेहमानों का ख्याल रखना, टीमों को बिल्कुल वक्त पर मैच शुरू करना, काफी सारे चैलेंजेस रहते हैं और उस चैलेंजेस को बखूबी निभाती हुई टीम under the leadership of Advocate Iftikhar Aga. A salute to this team of organizing such a wonderful tournament, Advocates Cricket League, Season 7, 2026. Beginning of the second over. Mylan D'Souza on the bowling mark. And yes, no, in the meantime, the throw comes in very handy. Shomi Kangle there. Just trying to rush the ball, but there's a fielder. Such a wonderful fielding now, as rightly said by Mama. The team is capable of defending the target. Of course, 216 is not a small target to defend. It's a huge, very comfortable target to defend. Nicely played away in the covers, but finds the fielder there. Good throw. Wonderful fielding, not allowing those singles to take by the batters. Just trying to keep the pressure going. Mylan. Oh, nicely played with the ball. His flash is short. The ball goes towards the deep gully region. Wonderful fielding, trying to just restrict every single run. That is the right approach, basically, which will definitely put the batters under pressure. If every ball has been fielded and not allowed to even take a single, then there is a pressure. Watchful. Right on the money. Mylan has come as a wonderful bowler. It's a new find for them, United Brothers. What a pick for United Brothers. Mylan D'Souza is a wonderful bowler, no doubt. Maintains the line, length. He's got optimum amount of pace. Maintains the good areas. Oh, nicely played. He sliced it. And good backup as well by Ashish Desai. That will sum up over number 2. Score is just 7. When they want 24 runs after 2 overs should have been the score. 7 for no loss. Legal Titans. Reminder, Advocates Cricket League, Season 7, 2026. The first semi-finals. Toss won by Legal Titans and opted to bowl first. Score 215. United score put up a target of 216 to win. And now they're defending it in style for sure. 2 overs complete. Score is just 7. Oh, could be a fine edge. Yes, they are peeling and going up with excitement. But not for long. Absolutely no reaction from Abrar Khan, the official umpire. But the way they went up peeling, definitely maybe the ball just sneaked away with the thigh pad. And nicely taken by the wicketkeeper. The Taraj Ka was behind the stumps. The Taraj Parab on the bowling mark. How many Dattaraj in the store for United Brothers?
The ball after pitching, just moving away, beautiful line. And that is his style of bowling. He's got smooth run up, high arm action. Bowls the right areas of the ball, the pitching just moving away sharply, making it slightly uncomfortable for the batter. Just pick it up the line in length so early for this particular bowler, that is the Taraj Parab. Wonderful find. Oh, lovely, good pull shot. Little bat on that. The ball will travel for sure. Plentiful of bat on that, and much needed boundary for Legal Titans. Much needed boundary. Oh, lovely shot picked up beautifully. Could be another boundary here, back to back. Sachit Mauskar speeding up, shifting the gears. Sachit Mauskar, he knows that they have to keep up with the ratio of 12 runs an over, or at least going at the rate of 10 also will serve the purpose. The big shot, the extras will also be counted. Nicely played away. Could be another one. A hat-trick of boundaries here. A hat-trick of boundaries from Sachit Mauskar. 16 ka dole. Making the good use of the power play overs. Anything in the gap, anything the ball finds, beats the short fielder, will race away to the boundary, and that's exactly what we're seeing. A hat-trick of boundaries coming from Sachit Mauskar, taking the score very quickly, speeding up. 19 runs on the board after the completion of 2. It was just 7 runs. This is good runs on the board. Oh, right in the block hole, nothing much to work with. Just playing towards the ball. Good comeback. The Taraj Parab with a beautiful delivery marks the end of 3 overs. 19 for no loss. Legal Titans chasing 216 to win. और एक चुनौती निश्चित तौर पर है लीगल टाइटंस के लिए. कोई फुटवर्क नहीं, केवल दिशा देने की कोशिश सचित मास्कर की ओर से, मगर डॉट गेंद के साथ फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी की लय में माइलन डिसोजा. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने. ही इज रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकली गुड बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट. बैकफुट पर फिर से एक बार बढ़िया ड्राइव, कम से कम 2 रन मिल सकते हैं बल्लेबाजों को. अच्छा फुटवर्क रघुनाथ परब की ओर से. निश्चित चौका था, मगर रघुनाथ परब अपनी कोशिश से 100% कमिटमेंट के साथ केवल 2 रन दिए, और 2 रन
बचाए अपनी टीम के लिए। तो ये कमिटमेंट देखा जा सकता है यूनाइटेड ब्रदर्स की फील्डिंग में, तभी तो टीम इतनी मजबूत, इतनी शानदार। रघुनाथ परब, जिस प्रकार से मैंने उनकी तारीफ की, कंप्लीट पैकेज है ये। ओ ठीक है, जो मिल सकता है चौका, मिला है मौका सचित माउस्कर को। ये उनके बल्ले से निकलता हुआ चौथा चौका। माध्यम से आप सभी तक इस मैचेस का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल अगर बात की जाए फोटोसोनिक्स की, फोटोसोनिक्स प्रोडक्ट गोवा स्पोर्ट्स लिविटॉन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी करते हैं। तो रीजनेबल रेट्स एंड वेरी गुड मिनरल वाटर। इफ यू वांट टू order, you can contact Shubham Naik, the proprietor of Photosonic Productions, for this wonderful, very tasty water, a lot of minerals. Of course, water doesn't have a taste, but these minerals makes it very tastier. The credit goes to Photosonic Production. They have come up with another product here. All the best for them, for Goa's Sports. Packaged drinking water supplied by Photosonic Productions. However, we are in the fourth over of the second inning. Score is 27 for no loss. These two batters are doing the job. Sachit Mauskar with 4 boundaries to his credit. Satyam just waiting for the right opportunity to rise up. This could be very interesting. First semi-finals of Adequates Cricket League Season 7. Nicely and good wristy work, but finds the fielder there. In spite of that, a single will be very handy here. Done with 4 overs, 28 on the board. For no loss. Legal Titans chasing 216 to win. स्कोर हुआ है 29 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत। अगर ये साझेदारी और 3-4 ओवर तक बल्लेबाजी करेगी तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचना रहेगा आसान। तो फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं आशीष फट्टे देसाई कुकोली से। और अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो उनके भाई गौरीश फट्टे देसाई इन एसोसिएशन विद हिज टीम, जिनमें शामिल आशीष देसाई भी बिल्कुल बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आया करते थे, सीपीएल कुकोली प्रीमियर लीग। और मेरा भी सौभाग्य रहा था कि उस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने का। कई सीजन तक, मुझे लगता है कि 12 सीजन तक उन्होंने लगातार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। मगर अब लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की फिराक में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं गौरीश फट्टे देसाई उनकी टीम के लिए, जो कि भाई हैं आशीष फट्टे देसाई, जो कि गेंदबाजी में आए। तो फिलहाल 5वीं ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं आशीष, और उनके सामने सत्यम, शिवम, सुंदरम, जो अपनी सुंदर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचित माउस्कर। सलामी जोड़ी अभी भी बरकरार। स्कोर 29 बिना किसी नुकसान के। हल्की सी डिजाइन गेंद और विकेट कीपर को बिल्कुल चकमा देकर चली गई है वाइड। ये चौका मुझे लगता है बल्ले से निकला है।
नहीं देखा कि वाइड का इशारा आया था. So it's a good correction. Abra, thank you. पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार दिशाहीन होती है, इस बार वाइड बिल्कुल. शाहरुख खान की भूमिका में नजर आते हुए अबरार खान फिर से एक बार अपनी बाहें को फैलाकर किरण के बजाय कहते हुए वाइड. और शाहरुख खान की ट्रेडमार्क स्टाइल, बाहें पसार कर बिल्कुल, जिस पर पूरा हिंदुस्तान फिदा. सुपरस्टार. पटकी हुई गेंद इस बार थोड़ी से बल्ले का मिलाप जरूर हुआ है और वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, मगर देखना होगा शायद गेंद को रोका जाएगा. स्वयं कप्तान गेंद के पीछे जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते, 2 रन आसानी के साथ बटोरते हुए सत्यम. हालांकि यहां पर टाइमिंग पर थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आएगा. अच्छी टाइमिंग होती तो निश्चित तौर पर गेंद जाती डीप लॉन्ग लेग की दिशा की और 4 रनों के लिए. और बिल्कुल जिस प्रकार से पावर प्ले का इस्तेमाल करना था बिल्कुल बल्लेबाज कर रहे हैं, खासतौर पर सचित माउस्कर लगातार बाउंड्रीज बटोरते हुए अपनी बल्लेबाजी में. बैकफुट पर कट कर दिया इस बार और वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल गेंद के पीछे, गेंद आगे आगे मगर वहां पर बैकअप फील्डर भी मौजूद. इसी बीच फिर से एक बार 2 रन. तालियों की गड़गड़ाहट लीगल टाइटंस के डगआउट से जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है बिल्कुल तारीफ के काबिल. और उस चुनौती को उन्होंने अपनाया है. जब 157 रन 16 ओवरों में बना सकते हैं तो 200 तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं है लीगल टाइटंस के लिए. फिर से एक बार रहेगी चुनौती, मगर इस बार थोड़ी सी बड़ी. बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात. माइलन डिसोजा की सुंदर फील्डिंग, जब तक गेंद को थ्रो करते केवल 1 रन स्कोर के खाते में सत्यम के ओर से. 15वीं ओवर जारी है और गेंदबाजी में आशीष देसाई. फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का, जो इस टूर्नामेंट को अपना पूरा सहयोग पूरा सपोर्ट करते हुए. और इस मैदान से मेरा काफी पुराना रिश्ता, लगभग 2009-10 से लगातार जुड़ा हूं एज अ ऑफिशियल कमेंटेटर. बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से चारों खाने चित किया बल्लेबाज को. समझ नहीं पाया कि गेंद कहां से आई और कहां चली गई. कभी कभार इस प्रकार की मैजिकल डिलीवरीज के जाने जाते हैं आशीष फट्टी देसाई. मगर जब से जुल्फें बढ़ाई हैं और भी तेवर तेज हुए हैं गेंदबाजी में, नेथन ब्रैकन की तरह बिल्कुल नजर आते हैं ये खिलाड़ी आशीष देसाई. कट कर दिया इस बार, केवल 1 रन मिल सकता है. वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते केवल 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 39 रन 5 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के एक
Short delivery. Just trying to back it up and try and shuffle and maybe try and play over the offside through the covers or maybe through point. Either of these two need to try and accelerate now. Just can't try and anchor the innings. Good delivery, excellent delivery. Again, so far, excellent start this by the skipper. Nicely cut away. And that's straight to the fielder. Will just be one. Flashed away down to the fielder at back to the point. Will be another single, brings his partner back on strike. That's nicely sorted away, but again we'll get one. Excellent bowling this so far by the United brothers. Bowling like champions. Haven't got the wicket, but the pressure is still mounting. Have a big total to chase down the Titans. Up in the air and will fall safe. Just get one. Another single taken. Well, things are happening as far as the United brothers are concerned. Just that the Titans need to try and double up now. Just can't afford to go in a shell. Once you go in that shell, you try to play with same pace. You need to try and accelerate at some point, as 215 is far-fetched from this point of time. Nicely played and very well fielded there. And that's got him. And the physio will be in action. He needs some ice. Definitely will be requiring some ice.
84 deliveries remaining. 14 overs and requiring 173. That's down the leg side and that will be wide. Extras. This might help a lot. Of course, it's the fabulous Friday and a double header. It's the second semi-final. We'll have the man in red go up against the man in black. Again, might have just trying to use some pace of the bowler. That's wide and an extra run as well. Without bowling a single delivery, has got 3. 18 juniors to take on the Lloyd challengers in that semi-final too. Will be in the afternoon session at exactly 2. Again, down the leg side, again a wide. Maybe this could be a plan of Raghunath Parab. I saw him in that college game. Him being part of that college team for the university game and bowled similar kind of line. And then fired one in. Similar group, him, Snehal Kautankar. Bowled 3 or 4 wides to Snehal and one darted in and completely castling him. Nicely played off the back foot. Down to the field at sweeper cover. In fact, at deep point. Just one. Don't know if he still remembers it. But was a big wicket that time as Snehal Kautankar was next big thing in Goan cricket. Currently also leading the side in the Vijay Hazare Trophy for Goa. Back past him, gone down the ground, will get 1. Doesn't give too much of air. Just tries to dart it in and not too much of loop in his delivery. Again, fires it in the air. And again, we'll pick up 1. As far as the Titans are concerned, they are looking to get runs through boundaries. But they are not on offer by the United Brothers. Defending champions, of course, have put a big total, a mammoth total on the scorecard. 215. Right on the bats and that's gone. That's what I was talking about. He just darts one in. And the first wicket falls. Out to bat as his team chasing a big total. Can the skipper produce something magical? Can he produce something unimaginable for his team? 215 always looked a big total, but you never know. If you have firm determination and will, you can achieve anything. Just that you need to have that self-belief. Does the skipper of Legal Titans has that belief in himself to chase down the target? Nicely played. Will get 1. Wants to come back for the second. No, just jogging
to get one. Gets off the mark with that single. Score moves on to 51. 51 for the loss of 1 after completion of 7. 7 overs done. It's 51 for 1. From the media box end. Eight overs done, 51 for the loss of 1 wicket. In pursuit of 215. Full toss. Nicely worked to the fielder at square leg. Nobody backing up, and so did Mylan. Didn't try and throw it to the stumps. The single taken. Kyle Ticklow will be feeling a bit broken-hearted, as he would have been the one man to try and get this big total. Just that his injury hasn't allowed him to bat. Up in the air. On the bounce to the fielder, coming in from the deep. Just one. Coburn Franco, the fielder, coming in from the boundary rope. Nicely played through the covers. No, not even trying to push for any couple or any try and get some boundaries. Just trying to build a partnership. You need to be going up and over 12 to 13 runs per over. Currently going at 4 to 5 runs per over. Flat batted down the ground, and that's a boundary. That's the approach they need. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Shubham Naik, Nigam Naik. Nicely played. Will get one. Again, get a boundary, get off strike. Up in the air. Fielder. Just gone over him. In fact, wide of him. Titans chasing 216 need these kind of overs, need these kind of boundaries. If not, they are certainly falling short in this very important semi-final one against the defending champions. 215, currently 65 for 1.
in 8 overs. 12 more overs remaining. And Raghunath Parab will continue. Match coming up next, semi-final 2. Loyal challengers to take on 18 Junas. 18 Junas had a fabulous run. Man in red will always signify with red the color of danger. They certainly are a dangerous side with some terrific batting lineup. Flighted delivery, very unlikely of Raghunath Parab, just tossing the ball in the air. We'll get one. Talked about the 18 Junas, some quality batsmen. India ranks Sachin Sardesai, of course, the pillar of that. Again, trying to play it off the back foot, Pravin. Might be caught on the crease just to try and work it on the onside. And of course, the loyal challengers. 100 this time around for Achit Chigwan. Team was 2 down, 2 losses back to back at the beginning, and then a fabulous dream that has taken them into the semi-finals. Terrific batting display by the skipper leading from the front, Achit Chigwan. Also really well supported by Datta Prasad Shirodkar, DP. Also Shailesh Redkar. Really good delivery. Just keeping the batsman on back foot, just not trying him to try and shimmy down the wicket or take that risk. Another single taken. 9th over in progress in this batting of Legal Titans in pursuit of 216 in 20 overs. Currently, we are in the 9th over in this run chase. Tossed up delivery, nicely played and powerfully struck. Gets a boundary. Full toss. Has he found the gap? No, he hasn't. Really good work by Milan. Very quick. And just another single. 9 overs done. It's 74 for 1 Legal Titans. Nurses as well and the staff which are available for your assistance, and also physio Chaitanya Kesarkar if you need any help regarding any niggle, any injury. Slow delivery that time. Excellent delivery. They're trying to buy a wicket. Maybe this pair
looks a formidable one for the legal titans, trying to break the partnership, as not to prolong the game, as when you can see most of the times legal titans haven't had that much of batting in the middle overs. Good delivery. Satyam, also a previous United Brothers player, this time playing for the legal titans, got dismissed at the first wicket. And now these two, very experienced, Sachit Mouskar and Praveen Gauss. Both of them have got so much of experience. Need to capitalize on that experience. That's gone through. Fine. And trying to flash the blade. Got an inside edge and back past the keeper. And the fielder had shot fine. Nicely played, but straight to the bowler in his own follow through. Again, after that delivery, which was very full, just shortening his length. .216 currently on 80-odd runs, this being the 10th over in progress. Left it alone, that will be wide. More extras. I talked about the second semi-final to be played on this particular venue here at the Zishe ground, Povarim. 8 engineers to take on Lawyer Challengers. That will be a sight as which team goes through. Again, good delivery. Excellent delivery again. Just not allowing the batsman to free his arms. Sachit Mauskar and Praveen Gauss in the middle. Sorted away. And very well fielded again. Raghunath Parab down there, the long on boundary. Single to end the over after completion of 10.
हल्की सी बाहर को जाती हुई गेंद और वाइड का इशारा, अतिरिक्त यहां पर मिलता हुआ अपनी लाइन से भटकती हुई गेंद, स्कोर 81 पर पहुंचता हुआ। बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात और क्या गेंद को रोक पाएंगे, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। लॉयस चैलेंज के धुरंधर कप्तान फिलहाल फ्रंट लाइन पे हैं अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से, सबसे अच्छी गेंदबाजी, सबसे अच्छी बल्लेबाजी के दम पर मैन ऑफ द सीरीज के एक ब्राइट खिलाड़ी हैं अचित सिगवान। ओ बढ़िया शॉट है, गेंद हवा में, देखना होगा, बिल्कुल टाटा बाय बाय, मैदान से बाहर, 6 रन 16 का। बेहतरीन टाइमिंग प्रवीण गावस की, उनके साथ सचित माउस्कर, 16 का डोला, फिर से एक बार बेहतरीन बल्लेबाजी की का प्रदर्शन दिखाई देता हुआ मैदान पर। हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त और एक्स्ट्रास काफी सारे स्कीपर की गेंदबाजी में। कैप्टन टू कैप्टन संकेत, कप्तान यूनाइटेड ब्रदर्स के, प्रवीण गावस कैप्टन लीगल टाइटंस। और इस बार हल्की सी दिशाहीन गेंद होती हुई पैड से टकराई, हालांकि कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ने की कोशिश थी, असफल। अच्छी कमबैक करते हुए संकेत, जो कि 11वीं ओवर प्रगति पर, मगर इरादे बिल्कुल साफ हैं बल्लेबाजों के, हर एक लूज डिलीवरी पर कड़ा प्रहार करेंगे। हाफ वॉली, फिर से एक बार दमदार शॉट, 4 रन शायद, बिल्कुल द लंच इज ओपन खिलाड़ियों के लिए। लंच आ चुका है, आप खाना ले सकते हैं। तो फिर से एक बार गेंद, इस बार बिल्कुल विकेट कीपर को चकमा देकर निकलती हुई, सोने पे सुहागा बिल्कुल होता हुआ बल्लेबाजों के लिए। लीगल टाइटन फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती हुई दमदार बल्लेबाजी। तरह युद्ध करते हुए, फाइट 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 एंड फाइट लाइक अ ब्रूसली। लीगल टाइटंस की यही खासियत, वी आर नॉट वेरी कॉम्प्लिसेंट, मामा के शब्द। बड़ा शॉट, गेंद फिर से एक बार खड़ी कर दिया हवा में, मगर वहां पर मौका कैच का, और कैच छूटता हुआ, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए कप्तान, बिल्कुल उनकी निगाहें आसमान पर, धन्यवाद देते हुए इस जीवनदान का। क्या इस जीवनदान का पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, उठा सकते हैं? फिर से एक बार उनकी निगाहें आसमान की ओर, बिल्कुल उनकी मां की दुआएं कप्तान प्रवीण गावस के साथ। तभी तो कहते हैं कि मां बाप की सेवा किया करो, क्योंकि उनकी दुआओं, उनकी प्रार्थना में काफी ताकत होती है।
तो एक आसान सा मौका बिल्कुल रघुनाथ पर अब अभी भी यकीन है, हालांकि इसी बीच अपनी उंगली को इंजर यहाँ पर फिजियो मौजूद है। रघु, इफ यू वांट टेक द हेल्प यू कैन। जी हाँ, बिल्कुल काफी दर्द में। हाफ वाली पर हेलीकॉप्टर शॉट। The 103 लीगल टाइटंस इस चौके के साथ फिर से एक बार सचित माउस्कर। 16 का डोला, 46 की छाती। फाइट 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 एंड फाइट लाइक ए ब्रूसली। बिल्कुल ब्रूसली की तरह युद्ध करते हुए फिर से एक बार अपनी बेहतरीन तेवर दिखाते हुए सचित माउस्कर। क्या चौका था वो, बिल्कुल MS धोनी की याद दिला दी उस चौके ने। एक विकेट के नुकसान पर कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं जब बात आती है लीगल टाइटंस की बल्लेबाजी की। बिल्कुल इस टीम की तारीफ करनी होगी, मगर जब तक ये धुरंधर बल्लेबाज क्रीज पर है कुछ भी कहना मुश्किल। और कप्तान संकेत जानते हैं कि एक विकेट लेना लाजमी इस मोड़ पर। अगर यूनाइटेड ब्रदर्स विकेट लेती है तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार कब्जा करेगी इस मैच पर। पटकी हुई गेंद हाथ खोलकर बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन मिल सकता है। प्रवीण गावस, भवन गेंदबाजी में। भवन बिल्कुल लगान की भुवन की तरह गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया ड्राइव, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है सचित माउस्कर ने। Fight, 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 and he's definitely fighting like a Bruce Lee. What a way to just perform for the team. The team requires someone to stay, play long inning. It is Sachit Mauskar who's playing 50 up for him. और एक रन के साथ धीरे धीरे 50 का आंकड़ा पार कर फिर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज को आप कितने भी अंडर प्रेशर डाल दो मगर अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ उभरेगा। और उस बल्लेबाज का नाम है सचित माउस्कर। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेल दिया है फिर से एक बार, मगर वहां पर गेंद को रोका जाएगा। केवल 1 रन। बिल्कुल कंट्रोल एग्रेशन की बेहतरीन मिसाल यहां पर पेश करते हुए T20 के फॉर्मेट में फिर से एक बार ये जोड़ी कामयाबी की ओर अपनी टीम को ले जाती हुई। कप्तान प्रवीण गावस उनके साथ सचित माउस्कर 50 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। और ये विकेट के साथ कप्तान आउट। 1 विकेट की दरकार थी।
बल्लेबाज आ चुके हैं। चलिए कोई समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू टीम यूनाइटेड ब्रदर्स। This lunch open and the players can have your lunch, please. The lunch is displayed. Please have your lunch, players. खाना तैयार है, आप अपना भोजन ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा जल्द करते हैं कप्तान एंड ऑल्सो ऑफिशियल्स। आई नो यू आर डूइंग तो किशन कन्हैया बल्लेबाजी में उतर चुके हैं, जो कि चौथे नंबर पर। प्रवीण गावस अपना निजी स्कोर 25 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए और भवन की गेंदबाजी पर 13 गेंदों में। यह विशेष जानकारी हमें मिलती हुई हमारे डिजिटल स्कोरर शैलेश नाइक, जो शैलेश नाइक को और भी खास स्कोरर बनाता हुआ, उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर से एक बार एक साझेदारी की यहां पर रहेगी आवश्यकता, मगर एक बल्लेबाज जो खड़ा है स्टैंडिंग टॉल, पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड प्लेइंग व्हाट अ मार्वेलस इनिंग, सचित माउस्कर पर काफी कुछ निर्भर करेगा। क्या साथ निभाएंगे? फिलहाल किशन कन्हैया स्ट्राइक पर। पटकी हुई गेंद इस बार कट कर दिया है। उतनी ही सुंदर फील्डिंग, मगर केवल 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए किशन। ओवर की समाप्ति इसी के साथ 13, 108 2 विकेट के नुकसान पर 216 का पीछा करती हुई लीगल टाइटंस। आखिरी 7 ओवर। सो स्कोर हुआ 108, 107 रनों की अभी भी 108 रनों की अभी भी जरूरत। बचे हुए 7 ओवरों में थोड़ा सा मुश्किल है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हालांकि 13 ओवर में बना है 108, अब बचे हुए 7 ओवरों में चाहिए 108। आधा सफर तय कर चुकी है टीम लीगल टाइटंस और अभी भी आधा सफर तय करना बाकी, मगर आधा सफर जो रहेगा मुश्किलों से भरपूर। बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार करना होगा, चौके छक्के बटोरने होंगे। लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ ही पहुंचा जा सकता है लक्ष्य तक। 216, माफी चाहूंगा, 12 ओवर समाप्त हुए हैं। करेक्शन, कंप्लीशन ऑफ 12 overs and 8 overs are remaining. Let us do it fast, Sanket. Batters, umpires, push them. Off the pad. I know what it is. There's no run. Deliberate. There's no signal. Of course, the ball has hit the pad. Oh, the ball was near the wicketkeeper, so that is one good reason why the batter just stayed there and did not even approach for a single. This is the 13th over. Once again, the skipper of United Brothers on the bowling mark. The ball is up and could be a simple catch here. Oh, he puts it down. How many catches have gone down today? 7 in the very first inning. And it looks like 2-3 catches in this inning as well. So altogether 10 catches have gone down. कुल मिलाकर 10 कैचेस छूटी हैं अब तक। 7 पहले इनिंग में, 3 इस इनिंग में। कैचेस विंस द मैचेस। पकड़ लो कैच, जीत लो मैच। मगर मौका बल्लेबाजों का किशन कन्हैया भी बिल्कुल धन्यवाद देते हुए ऊपर वाले का। कट करने की कोशिश, इस बार बैकफुट पर सुंदर गेंद के साथ पूरी तरह से चारों खाने चित किया। सुंदर गेंद संकेत की।
समझ नहीं पाए, बिल्कुल लाइन सटीक और हल्की सी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज सचित मौस्कर को। सचित एक नाम जो बिल्कुल और एक इतिहास रच सकता है इस सेमीफाइनल्स में। और काफी बाहर गेंद, इतनी बाहर कि अंपायर को मजबूर किया दोनों ही हाथ फैलाने पर, इतनी बाहर। वाइड का इशारा और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110। बड़ा शॉट, गेंद हवा में, सही पकड़ नहीं बनाई और एक कैच के साथ सबसे खतरनाक। So immediately after this match, the toss will be done. So the captain of 18 juniors and the captain of Loy's Challenges, please be ready. Requesting the captain of 18 juniors and the captain of Loy's Challenges, Achil Sigwan, to please be ready. Immediately after the match, the toss ceremony will be done. No wasting of time. So in the meantime, the captains, please prepare the list of the players and be ready for the toss. So all the best for the second semi-finals to be played between Loy's Challenges and 18 juniors. प्रदोष डांगी, प्लीज बी रेडी, द कैप्टन ऑफ 18 जूनर्स, क्योंकि तुरंत इस मैच के बाद टॉस किया जाएगा। एक भी लम्हा न वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय बिल्कुल काफी कम है। तो उसी का आह्वान करते हुए इम्तियाज शेख अंपायर, लेट्स डू इट फास्ट फास्ट। ओ काफी उछाल भरी गेंद, फिर से एक बार सुंदर गेंद के साथ चकमा दिया और वेलकम किया नए बल्लेबाज का मिथुन गोवेंकर, नए बल्लेबाज। ये बल्लेबाज के बल्ले से पिछले वर्ष एक सेंचुरी लगी है। क्या सेमीफाइनल में एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, ले जाएंगे अपनी टीम की नैया पार कराएंगे, देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया ड्राइव, इस एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए माइलन डिसूजा की सुंदर फील्डिंग, मगर वहां पर अच्छा बैकअप भी। एक रन और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति 14 ओवर समाप्त। माफी चाहूंगा, 13 ओवर समाप्त होते हुए और 13 ओवर की समाप्ति पर नेल्सन यानी कि 1-1-1 फॉर 3 लीगल टाइटल। जमाने की कोशिश करती हुई यूनाइटेड ब्रदर्स 3 विकेट के नुकसान पर, जब प्रवीण और सचित क्रीज पर थे। ओ बड़ा शॉट है, गेंद हवा में है मगर शायद एक ही रन मिल पाया, क्योंकि इतनी बेहतरीन फील्डिंग की जाती है इस टीम की ओर से कि तारीफ करनी बनती है। Once again, a very quick reminder, the captain of both the teams, Loy's Challenges and 18 Juniors, please be ready for the toss. Soon after this match, the toss will be done without wasting a minute. ओहो, एक कमाल का शॉट है, किशन कन्हैया का ये शॉट। 4
कहीं ना कहीं इस टीम में खलकेगी और उसकी कमी बिल्कुल महसूस होती हुई, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाज अपनी टीम के रहे हैं काइल टिकलो, फिलहाल इंजर्ड। और फिलहाल सुपर सब की रोल में बल्लेबाजी करेंगे। देखिए पैड अप करके तैयार है जंग के मैदान में उतरने के लिए। नाम है काइल टिकलो। बढ़िया ड्राइव, डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। मुश्किल रहेगा गेंद को रोकना और गेंद रफ्तार पकड़ते हुई सीमा रेखा पार 4 होने के लिए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मिथुन गोयकर के बल्ले बल्लेबाजों पर मिथुन गोवेकर, उनके साथ किशन कन्हैया, फिर से एक बार एक जोड़ी उभर कर आती हुई। तो देखिए क्रिकेट की यही खूबसूरती है, माइलन शूलेस बांधते हुए, कोई ईगो नहीं, कोई एयर नहीं। एंड दैट्स रीजन व्हाई क्रिकेट इज कॉल्ड अ जेंटलमैन्स गेम। और एडिक्वेस क्रिकेट लीग में एक बेहतरीन डिसिप्लिन जो कि देखने को मिला है। बढ़िया ड्राइव, फिर से एक बार स्टाइलिश मिथुन गोयकर की ओर से। इस बार गेंद को शायद रोका जाएगा। कुबन फ्रैंको, अपनी टीम के सबसे लंबे ऊंचे खिलाड़ी, जिनकी हाइट 6 फीट 3 इंचेस, जो सीधे हाथ के क्रिस गेल्स, यूनाइटेड ब्रदर्स के। और इस बार पटकी हुई गेंद काफी उछाल प्राप्त करती हुई, काफी तेज तर्रार भी, गति पर पूरी तरह से आश्चर्यचकित किया बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 14, और 14 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 122, 3 विकेट के नुकसान पर 216 का पीछा करती हुई लीगल टाइटंस। ओवर समाप्त, स्कोर 122। फिर से एक बार कप्तान गेंदबाजी कर में, जो कि 15वीं ओवर लेकर, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कॉम्बॉक्स में अंग्रेजी के बेहतरीन कमेंटेटर शाम। बढ़िया ड्राइव, मगर गेंद को शायद रोका जाएगा। सुंदर फील्डिंग्स में कोई दो राय नहीं। यूनाइटेड ब्रदर्स की यही खासियत, जब बल्लेबाजी करते हैं तो 200 के पार, जब गेंदबाजी करते हैं तो पहले विकेट चटकाकर एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और वही दबाव अब नजर आता हुआ फिलहाल बल्लेबाजों में, मगर एक अच्छी साझेदारी भी। क्या होगा इस मैच में अभी भी कहना मुश्किल, मगर फाइट 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 फाइट, लीगल टाइटंस फाइटिंग लाइक ए ब्रूसली। स्कूप कर दिया इस बार किशन कन्हैया का, ये बिल्कुल ट्रेडमार्क शॉट है। 4 रन, तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं डगआउट से। अपने कंधों पर ओढ़ ली है, लक्ष्य तक पहुंचना है, जीतना है, फाइनल्स में जाना है, यह इरादा बनाकर बिल्कुल मैदान पर उतरे हैं किशन कन्हैया। हाफ वाली इस बार हल्की सी बाहर को जाती हुई गेंद, सुंदर गेंद कराते हुए। कभी कभार गेंद इतनी सुंदर करते हैं कप्तान, बल्लेबाज समझ नहीं पाते और गेंद बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है।
गेंद को अभी भी शाइन देकर कुछ स्विंग की मदद तलब करने की कोशिश कप्तान द्वारा। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, कम से कम 2 रन की कोशिश रहेगी। पहला रन काफी तेज, विकेट कीपर गेंद के पीछे और ये चौका मिलता हुआ। देवी बिल्कुल स्पीकर के बाजू ही बैठी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हियर द म्यूजिक लाउड। कभी कभार हंसी मजाक होते रहेंगे क्योंकि मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लाना उद्देश्य है। दत्ता प्रसाद शिरोडकर दूर वाली छोर से आते हुए पवेलियन की ओर, हाथ में बल्ला लेकर लहराते हुए। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, जी हां जा सकती है मैदान के बाहर। सागर सलगांवकर साहब का, इंडस्ट्रियलिस्ट, डेजर्ट एंड मो एवेंजर्स के ओनर, एक बेहतरीन खिलाड़ी भी। फिलहाल कट कर दिया इस बार और एक चौका किशन कन्हैया। इस टूर्नामेंट को भी काफी सपोर्ट किया है डेजर्ट मो एवेंजर्स ने। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर सागर सलगांवकर साहब का, उनका स्वागत, जोकार, इस्तकबाल एंड वार्म वेलकम। तो 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 141, 216 का पीछा करती हुई। तो देखना होगा कि बची हुई 5 ओवरों में क्या कुछ कर गुजरते हैं ये बल्लेबाज। और आगे का हाल अंग्रेजी में मेरे सहयोगी द डैशिंग कमेंटेटर श्याम कलंगुटकर की जुबानी। Sir, 75 runs required to win in the remaining 5 overs. Tough task this. 15 runs per over. That's the asking rate right now. Can Kishan Kanaya and Mithun Govekar get that total? 75 more required in 5 overs. Well, definitely will be a hell of a chase if they get it there. But you never know with the bowlers of United Brothers. Kyle also padded up. And he will also try and come out with all guns blazing. As we welcome Dr. Sagar Salgaonkar from the Chinu, as well as the Desitin Mo. Really good cricketer, plays all the leagues in Goa. A fine cricketer. A very good friend of Iftikhar Haga, sir. And all the lawyers. 75 required to win in exactly 5 overs. 30 deliveries. Here's Raghunath Parab from the media box end. Up in the air. Chance and gone. Wicket.
box, Kyle Ticklow. Brave man Kyle to walk out to bat. Already got injured, dislocated his finger few days back, a few weeks back, and still in lot of pain. But out there for his team to lift the spirits and again try and bat to get those remaining runs. 75 required now to win. As I can say, very brave, very courageous. We've been seeing this game has always given us some heroes and nothing short of heroism in the middle as Kyle is facing Raghunath Parab. Swings it across. He's in a lot of pain as that top hand will come off most of the times. Has got some extra protection, but just that twist when he's trying to play it on the onside will be difficult for him. Wrist also comes into play, bottom hand as well as that top hand most of the times becomes very much difficult for you when you try to maneuver the ball. There's a lot of pressure comes on that top hand. Again, played it fine. Keep after it. Can he stop that boundary? No, he can't. Match referee to the officials to finish the game within the next 15 to 20 minutes. And also requesting the teams to please make it quick so that we have another game which doesn't get deducted due to some overs. There won't be any deductions. So that's why we need to start the game exactly at 2. So please keep that in mind. Up in the air. And just falling short. That fielder might have been coming forward, but wasn't. Another single taken. Really won't mind the singles. The United brothers right now. Only the boundaries might just get them to try and change the field. Again, Kyle on strike. Can Kyle manufacture a shot and try and get a boundary? Played down the ground. Has he hit it powerfully? Indeed he has. That's gone. And 50 up for the man in blue. 63 more required in 25. What pain, what pressure. He knows only one thing, see the ball, hit the ball. And currently he's doing that. Kyle Ticklow. Down the leg side and will be a wide. More extras. So the bowler just trying to get in that frame of mind where he just wants to finish off that over now. Again, fire it again. In the air and on the bounce to the fielder. Chance of run out and will be safe. Kyle Ticklow. Single to end the over after completion of 16 overs. It's 155
gone over the keeper. And that's for 42. As I said earlier, if you have that will, if you have that determination, if you have that belief, you can achieve anything. 216 always looked a difficult total. But these two, straight to the fielder on the bounce. Maybe that injury has brought some new lease of life to Kyle, as he's been middling every delivery. And that's some really good signs for his team and for himself as well. Nicely played, back to away, and that's for 21 deliveries remaining and requiring 52. Certainly this over has produced 2 boundaries, 9 runs of the first 3 deliveries. Short delivery by Milan. And this time, but a fumble from that fielder at covers. Will get one. 10 of 4 deliveries. 51 required in 20. Well, certainly this game, nothing short of a thriller. And definitely heading towards it, going down the wire. Slow delivery, nicely played in the gap. Fielder, can he track that down? No, he can't. That's another. Charge right now. Short delivery again, banged in, straight to the fielder. Chance of run out. Oh, direct hit would have been very close. Would send back his partner. Single taken after completion of 17. .46 required in 18. And certainly these last 3 to 4 overs have been chancing the legal titans, the men in blue. .46 in 18.
Short delivery, thump down the ground, fielder will watch it sail over. For him pace, and with that pace, he's hitting you down the ground. Short delivery, this time swatted away as he found the gap. He has yet. Team. Can he get towards the target? Can he achieve it for his team to get them into that big final? This time trying, and the television umpire will have a look if it's gone. Touch and go though. Well, this certainly decides. Resume. Kyle Ticklow again. Deliveries 36 and 16. Can Kyle Ticklow, with this gem of an innings, get his team home? An elusive final which is awaiting them. Or are the defending champions just keeping them under check? 15 deliveries required. 36. Nicely played. Oh, that's gone very quickly. Back past the bowler. Well, certainly he was in danger. Would have taken him off. Might have just got a fingertip to it. Raghunath Parab. That was travelling at rate of knots. Very lucky that didn't get anywhere to his other part of the body. Single down the ground. 35 in 14. The fielder, can he cut that off? He can't. That's 4 more. Another bound. Score. 31 required in 13. Lets it go. That will be wide. Pressure on the bowler. He is clueless right now. Whether to bowl full or try and bowl outside the arc of the batsman. 30 required in 13. Slogs away down the ground, and that's onto the side screen.
along with Kanaya are taking their team home. As far as the United brothers are concerned, is this the last roll of the dice? Can they get back in this game? Currently bossing this game, the Legal Titans. 24 to win. Who would have thought 216 can be chased down, or can this team in blue get anywhere closer? 24, last 24 runs required to win in 12 deliveries. Yes, Milan. Smashed it straight and 4. Fired in 11. He didn't even try to run. So how crisply and how powerfully did he struck the ball down the ground. Short delivery, slotted away and gone all the way for 6. Runs to win. Well, what it has come down to. 10 deliveries, 14 runs. United brothers asking for miracles. Do they have that miracle? Yorker delivery, looking for the run out. No, can't. Dot delivery. Still 3 deliveries remaining. 9 deliveries requiring 14. 216 after being put into bat. Who would have thought that it has come down to the 14 runs requiring in 9. Swing missed. Dot delivery. Another good delivery. Really good comeback this by Milan. A boundary, a maximum. 2 dots on the trot. 14 required. Can the defending champions defend this total? Swing again, missed again. Dot delivery. So last delivery coming up of this penultimate over. Milan has certainly made some inroads in this last over of his spell. 7 deliveries requiring 14. Let's check the field. Man at deep backward square. Connects one in the air and gone over. 6 more. Eight more to win now. 8 required in 6 deliveries. Well. Kyle Ticklow certainly is turning it on and taking his team towards that elusive final. This similar kind of situation happened as United Brothers took on Legal Titans in that last group game, where the Legal Titans were requiring 157. Beg your pardon, 157 in 16.1. They achieved the target and they are into the semi-finals. And now pressure on the United Brothers, the defending champions, to be hosted out, as just 8 runs required of the final over.
Kyle along with Kanaya. Eight runs required. Bowen has been given the ball, has been trusted to bowl this final over. That's up in the air. Fielder coming in. Taken. Is there a twist in the tail? Has the wicket fallen on the very first delivery? And the new batsman will have to come and be on strike. Still requiring 8 in 5 deliveries. Naya coming to an end. 45. What he could get and help his team towards the target. Still requiring 8 in 5 deliveries. 8 in 5. New man in Sainath. Wicket of the first for Bhuvan. Can he close in this game? Can he do the unimaginable for his skipper, for his owner of the United Brothers? As 8 is to be defended in this last over. 5 deliveries remaining, requiring 8. Swatted away. Will get one. As Kyle will try and shell the strike now for the remaining 4 deliveries. 7 required in 4. And just to be precise, Praveen Gauss will be telling him to try and play out all 4 deliveries so that you can get us towards that target, to achieve that target. 4 deliveries remaining and requiring 7 to win. What game this? Absolute miracle, you can say. Thrilling game. Flown away. Has it gone for 4? Indeed it has. Three required in 3. 3 deliveries, 3 to win. Big hit. And that's gone. Take his team into the finals. Take a bow. Kyle Tiglo, injured last year, few days back, and now in this particular game, tremendous, fabulous batting display from him. Came out as 6 down and manufactured a fabulous knock of 55. So the Legal Titans win this game by 5 wickets and they are into the finals. It's Yes, a back big live to congratulations. Nadeem Ahmed, sir. Thank you, Sham. Big congratulations to Legal Titans. They're through to the finals. And what a run chase going down in the history of ACL. Chasing 216. And the man who steals the show, Kyle Tiglo. 55 of 19 deliveries.
5 sixes and 5 boundaries to his account, in spite of the fact that he is having a wrist injury, dislocation of the wrist, but still he has that firepower to take the team to the target. And now you're paging for the captaincy. Both the captains are here. Thank you. Yes, I would like to. Yes, ACL organizers, please escort chief guest of the. We have with us Dr. Sagar Salgaonkar, Managing Director, Geno Pharmaceuticals Limited, to spin the coin. Thank you. So in the meantime, Kyle, what a wonderful knock by you. In spite of the injury, you're still the show, taking the team to the finals. I think my team needed me more than ever, and I had to deliver. I knew I had the belief to do it, and that's what happened. Kyle, you are defending the injury, and how did you make it? You were almost out of the team, but still you made sure that you came out and you sealed the show. 55 or just 19 deliveries. I was not thinking about the injury. I just want to win the game for my team. That's it. All the best. Have a good one. More to talk to you. But now it's time for the toss ceremony. Both the team captains are here. Pradosh Dangi, the dashing captain of 18 Juniors. Achit Sigwan, the captain of Lowest Challenges. Both are in the readiness. We have with us the chief guest who will spin the coin. Dr. Sagar Salgaonkar. He himself is a good cricket player. Managing Director, Geno Pharmaceuticals Limited, with official umpire Imtiaz Sheikh to the toss ceremony. Exchanging of the list. The beginning of the second semi-finals. Sir holds the coin, and who's going to call? Who's going to call? Achit is going to call. Heads, he says, and the coin come down in heads. Achit, you have won the toss, and what do you make of the pitch? Pata wicket? Yeah, absolutely. What was a match? Superb. So we are going to bat first. So at least not less than 200 is exactly what you will be looking for. But your team has proven in the last match, your team definitely did cross 200 mark. Yeah, absolutely. But again, I'm saying we are on the basics. 170, 180 is again a good score. They played some brilliant innings. So it was a good match. But we are looking for 170, 180. Anything is grace. Have a good one. Pradosh, now the toss is up, so absolutely not in the hands. What is there is how to put your performance, executed the plans on the ground. So it's a different strategy for you. Certainly, we have to bowl a good length ball. Looking at the wicket, it's a batting wicket. So we have to restrict them in anywhere around 150 to 160. It will be good for to be chased down. Pradosh, picking up early wickets will be a good challenge for you. If your bowlers can do that, then you can put pressure on the batters. Definitely, if we can pick up some early where they have a very good side also from the batting order. So if we can manage to pick up those wickets, we can't say and the game can be done in any way. So all the best. Have a good one. So now I would like to request Dr. Sagar Salgaonkar, the Managing Director, Geno Pharmaceuticals Limited, to say a few words. We've been associated with this league, Advocates Cricket League, for quite a few years now. And we've just seen the league growing from strength to strength. The previous match, I think, is a perfect example of how far the league has progressed. It's fantastic. I mean, 215 and then getting chased, and that fantastic innings by Kyle and the Kanaya and the other. I think it's really fantastic, and it's good to see the tournament talent progressing. I wish Ifti and all the organizers all the best. I wish the teams who are playing the second semi-finals all the best. And I'm always happy. Desert Sun Moore is always happy to be associated with the league. Thank you. Thank you, sir, for your kind words and also support from Desert Mo Avengers to this ACL League. The news coming right from the center for the second semi-final is Lowest Challengers, who won the toss, and they are batting first.
the far end. Dattaprasad Shirodkar on strike. First ball, played it away beautifully. And the ball is nicely fit in the deep point region. Just one run to get off the mark with this single. Oh, watchfully played by Swapnil. There is a chase there. The ball will go past. And Swapnil gets off the mark with a boundary. What a way to open an account for himself with the boundary played towards the deep covers. A wonderful captain, Rachit Sigwan. Just a bit of a warm-up. Very challenging match. Absolutely a knockout. Team winning stays, team winning, team losing will be spectators. So which team wants to be in the thick of action? Their performance will decide for sure. In the meantime, the first wicket down, it looks like appealing for caught behind. They are certain 18 Junus. And yes, the batter is walking out. It means lowest challenges lost Swapnil. 18 Junus definitely celebrating this wicket. Wow, early breakthrough, caught behind, fine edge, wicketkeeper takes it. You can hear that JJ car on the ground. 18 Junus enjoying and celebrating the first fall of the wicket of lowest challenges. Swapnil departs after scoring 4 runs. Happy with that early breakthrough. Good catch taken by Sachin Sardesai to dismiss Swapnil. That brings Rishabh on strike. Oh, just allowing the ball to go past, and rightfully so, wide signal way outside the leg stump. Rishabh is another good upcoming star performer for Loy's challenges. Some new faces to see. Mylan D'Souza in the morning match, and now Rishabh. Oh, once again, the ball is way outside the leg stump, and the ball might just go past the fielders. Yes, it is. So wide in a boundary. Few bonus runs here for Loy's challenges. And this is the difficulty what the bowlers will have definitely, because what will be a good nice deliveries just outside the off stump for the right-handers becomes slightly tricky when it comes to the left-hander. And that is one reason why Viraj Tar just not getting that line perfect. Correction, Kashinath. He's got a very good height, tall and lanky. Oh yes, still he struggles.
extras in the process. Apin and Kishore giving their 100%. It's teamwork behind the curtains of Educates Cricket League Season 7, 2026. Achit Sigwan padding up, and so is a lovely drive. Russaj Talaulikar. A partnership will be very handy here for the batters. And Lois Challengers are known to provide a wonderful partnership right from the beginning. It was unfortunate for Swapnil. A fine edge, nicely taken by Sachin to dismiss the first wicket. Well bowled. Now he's got that line perfect. Not struggling at all with the lining, even to the left hander. And that was a beauty. Right in the block hole. Rishabh literally needed to dig it out. Another one off the pad looks like, but we'll have to wait for the umpire signaling what it is. Leg by. My eyesight are still good. In spite of seeing a lot of reels on the mobile phone. I will just ask the doctor, what is the remedy to keep our eyes strong and bright in spite of these blue screens? The children are absolutely addicted to the mobiles. That has become a biggest problem to all the parents. Twelve runs after the completion of the very first over. Akshay Vengulagra on the bowling mark from the far end to begin the second. The score is 12 for the loss of 1 wicket. It's a good combination. Left hand, right hand will work well for Lois Challenges. Correction, score is 13 after the completion of the very first over. So 13 runs coming up of Kashinath's first over. But he has picked up a wicket. Rishabh gains a strike. Left hander will face Akshay. Round the wicket. Appeal for LBW but denied. In the meantime, Shaun the stumps misses the target. Oh, there was a mix-up in the meantime. Well, Akshay Vengulagra appealing for LBW. But he started off with a beautiful delivery. Just brushed to the pad and a leg by single. Will take the score to 14 runs. That brings Datta Prasad Shirodkar. A wonderful starter. Keeps his head down, plays every ball to the merit. That is his quality of batting, Datta Prasad Shirodkar. And always a very consistent batter that he is to watch. Can he again today repeat his good performance like he was doing all these matches of ACL playing for Lois Challenges? Good work of the wrist. Another single here. Lois Challenges team owner, Advocate Iftikhar Aga. What a great personality. Is also the architecture of this wonderful Educates Cricket League. All seasons. And this is season 7. Since last 7 years. As rightly said by Dr. Sagar Salgaonkar. This tournament is just going strength to strength. Big support from Goa Cricket Association. Big thank you.
Half volley, good drive towards the covers. A single, comfortable. But not two. Good to see from far the president of Veterans Cricket Association, Shri Balu Phadke sir, with other officials. Lovely drive, but there is a field. Excellent piece of fielding there. No chance of a single. Is this supposed to Shirokar played straight to the point fielder? And GC is definitely doing a lot to promote cricket, boys and girls. Good walk of hands and will be a single here, comfortable. Girls team under 14 is playing at Visakhapatnam. And a team of 30 young girls under the age of 14 has flown to Visakhapatnam to play few matches there. And I wish them all the best on behalf of Goa Cricket Association and Advocates Cricket League. Lovely drive down the ground. The ball has gone past the bowler. Good effort on his own bowling by Akshay. Maybe a little bit of a hand to that. And that single has sum up over number 2. 18 runs for the loss of 1 wicket. Lois challenges batting first. So after the completion of 2 overs, score is 18 runs. Rohan Shirodkar, another good bowler of 18 juniors, has proven his mettle. Will be a wide. This extra will take the score to 19. When it comes to the batters of this tournament, Achit Sigwan leads the team with 270 runs. Satyam with 183. Dattaraj with 65 plus 47. That makes 112. Will be another wide here. Rohan struggling for the moment. These extras are definitely helping Team Lois challenges gain some confidence and gain some momentum. The 4th number is Venkatesh with 154 runs. Rusaj Talalika 149. Datta Prasad Shirodkar with 146. Dattaraj Gavas 142. And with Devanand Kurgaonkar 86 runs. While talking about the bowling, is Viraj Tar the leading wicket taker of the tournament so far? 9 wickets. Achit 9 wickets. Lovely drive with the covers but finds the filler. And at number 3 is Dattaraj Parab with 7 wickets. Kashinath with 7 wickets. Raghu Parab with 7 wickets. Mylan D'Souza with 7 wickets. And Sandeep Naik with 7 wickets in the meantime. Beautifully put to the lower full toss. The bowler made the mistake and paid the price. It's a boundary.
tournament. Big congratulations to him, a smiling face. Wonderful character. Rishabh fires it to the fence. Rohan Shirudkar bringing some changes on the field there. Swapnil is slightly disappointed, but he's definitely confident that his team will do well. In the meantime, a beautiful delivery by Rohan. Rishabh was slightly lethargic on that occasion. And the ball has beaten all ends up. There comes the real heroes, Mithun Goenka, followed by the captain Praveen Gavas and Virat Kohli look-alike Kyle Tiklo. Still the show. Lovely shot, beautifully driven, but we'll find a fielder there in the mid-wicket region. Will be another single here. So just trying to form a partnership by playing singles and twos after the fall of the first wicket of Swapnil. Team is trying to rebuild, reconstruct the inning. The defending champions are out of this tournament, United Brothers, in spite of the fact that they scored 215 runs. Lovely drive, what a great effort on his own bowling by Rohan. So end of 3 overs, score is 25 for the loss of 1 wicket. Because days are short and nights are long, and once again, it's always good to see Sachit Mauskar. Wonderful character and what a performer. True entertainer of the crowd. Legal Titans once again have created history, chasing 216. Lovely drive, beautifully picked up, finds the fielder, but will get an easy single. Slowly just picking up the pace, looking more full of confidence, Rishabh and Datta Prasad Shirudkar. This combination is working well for now. They're just sticking to singles and twos, not really looking for boundaries. The reason is they want to just form a good partnership. Then runs can come any given time. Slightly away. That was a beauty. Akshay Vengulikar into the 4th over. The second semi-finals, 18 Juniors versus Lois Challengers. On the back foot, beautifully played away. Single again. The basic idea of the batters is singles, and just get set. And we all know once the batter gets set, how dangerous those batters are to get them out. Especially that the Prasad Shirudkar, he's got that classic act, style and the timing, good footwork. He's got every shot in his kitty bag. Lovely drive down the ground, but straight to the field. Protection there, no chance of a single. Another tight 10 over. This is turning out to be Akshay Vengulikar. Sometimes over the wicket, sometimes around the wicket. Ball balls the right area. This time slightly away. The ball drifting more towards the leg side. And a wide signal. A bit of a quicker delivery that was by Akshay.
Well, a single here, or maybe two this time. But there is one share for United Brothers that will be conveyed to you after this over. The smiling face of Sanket, the captain of United Brothers. Bowled him right on the money. The second wicket goes down of Loy's Challengers. Rishabh missed it completely. The ball right onto the stumps. This one is for United Brothers. मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है. मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते हैं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है. But they have put up a great show. United Brothers, the defending champions, are out of this tournament. But what a great journey they had. Every match they played and took their team under the captainship of Sanket to the semi-finals. But Legal Titans had altogether different plan. They had one trump card who was injured, and United Brothers did not realize that, and that trump card worked wonders. And the name of the trump card is Kyle Ticklow. There you go. Mithun Goengar in a party mood. So beginning of the fifth over, score is 30 for the loss of 2 wickets. Achit Sigwan, the captain, joins in. The first centurion and the only century of this tournament. Virastar, lovely drive down the ground. There is a field, will cut it off. He does well. Diving effort. Stop the ball. What could have been a couple of runs. Datta Prasad Shirodkar. Rebuilding the inning this time alongside the captain Achit Sigwan. What a wonderful tournament he's having as a captain. 270 runs with the bat, 9 wickets while bowling. The only century for his name, 116 of 57. 9 boundaries, 5 huge sixes. Against the strike, jersey number 27. Watchful now. Waiting is a good call. Virashtar is a wonderful bowler, no doubt. He's got that height. He's got that high arm action. Gets a good hold of the grip of the ball and bowls in the right area. Reads the mind of the batter. That's a special ability which Viraj Tar has. Wonderful performer for Team 18 Juniors. Complete package of T20. Watchful now. Slow and steady. Back to back 2 dots.
He's a silent volcano, let me tell you all. Once he gets going, so firework all around the ground. Yes, the call this time gets off the mark with a single. Good calling. Well responded by Datta Prasad Shirudkar. And this could be one good partnership for sure, because these both batters are capable of staying, storing, playing long and sensible inning. Datta Prasad Shirudkar once again looking to play a long inning for sure alongside captain Achit Sigwan. Slight change. Viraj Tar. Just moving that short covers fielder. Lovely shot picked up beautifully, nice and straight down the ground. But there is a field in the long on who will cut it off. That was a beautiful pick by Datta Prasad Shirodkar. Just playing the field. He knows exactly there's no fielder there towards mid on. There is field in the deep long on though. Half volley. A bit of inside edge. And the ball traveling towards the long on for another single here from the captain's bat. He gives a slow start to himself. And slowly but surely speeds up. That single will sum up over number 5. 34 runs on the DP. Neck. Is it or not? Everybody went up. Everybody. As when he tried to swing, the ball has gone past him, but the bat just hitting his sleeve just above the pads. Fabulous camera work that from the Photosonic Productions. And rightly so, the entire team went up. They heard a sound, but just the bat brushing his sleeve is just being done there by Photosonic Productions. Really good camera work. This time left alone, and that will be wide. Extras. What a game we witnessed. The first semi-final. 216 chased down with utmost ease in the end. Courtesy of Kanaya and Kyle Tickler. Squatted away. Down to the man at sweeper cover. Just one. Score moves on to 35. Achit Shigwan had no hesitation in batting first after winning the toss. Deciding that this is a belter of a wicket. Why don't we put runs on the board and not try and do anything fancy? Full toss. Help yourself.
And it's gone. One bounce into the fence for 4. Don't know about love, but certainly in pain, the defending champions with that loss. This time down the leg side. And that's very well stopped by that fielder. Will be just 1. Leg by is the signal given. A single taken on that one by DP. Would like to welcome again Madan sir and his wife. That's gone through, and that's gone for 4. Easy pickings. He won't. Against the 18 Junas. Viraj Tar again down the leg side will get 1. DP. Most likely these two in the middle. DP will try and anchor the innings. As far as the skipper is concerned, he will try and play some shots, manufacture something so that he can put a good total on the scorecard. DP on the other hand will look to bet out the overs and try and accelerate in the very end or maybe in the middle phase. Good delivery by Viraj. Viraj Tar holds the key for the man in red. If they need some kind of assurance in that middle overs to put the man in black in pressure, this man holds the fort. Good delivery, nicely turned around. This hallmark of a good batsman, Achit Chigwan, knows exactly how to combat any kind of situation.
Well, credit has to be given to the entire team of Lawyer Challengers, the way they have come up, risen their game to the occasion. Nicely played. Fielder. Can he get there? No. That's a boundary. Flighted delivery again, trying to replicate the same DP. Is really well caressed through the covers for boundary. Timed it so well that the fielder at wideish bit of long off couldn't quite cut it off. Nikhil. Good delivery, straight in his follow through. Viraj Tar. Dot delivery to end the over after completion of 7. 50. Nicely bowled. Just can't maneuver anything on that one. Dot delivery to begin. That's gone away. And that fielder can't track it down. That's another. Nicely worked around. Will get one. The single taken. False start. Now the batsman is not ready. Cat and mouse between the batsman and the bowler. Nicely played. Straight to the man though at point. Will be really interesting when the leg spinner comes on to bowl, as I tend to see leg spinners get some turn, and this particular third square on this PCA ground definitely have something. He's not allowing the batsman to settle.
Tossed up delivery. Swept away. Down to the man. Head deep back to the square. Will just be one. Single taken on that delivery, which brings Chigwan back on strike. A decent bit of over this, not much given. Again, touch and run. Another single taken quite comfortably. Single to end the over after completion of 8. Eight overs done, 58 for the loss of 2 wickets. Lower challengers deciding to bat first after winning the toss. Here's Sandeep Gosavi. Up against Ajit Chigwan. Again, just trying to play it fine. Fumble from the wicketkeeper. Single taken in form of leg byes. Officials in the middle, Vijay Kumar Reddy and Abrar Khan as the television umpire to look on every proceeding of this particular game. It is Imtu Sheikh. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Shailesh Naik doing the digital scoring. Trying to play it straight, but gets the outside half of the bat. Will just be one. Biting the time in the middle, these two. Certainly getting the boundaries when they need to as well. Again, advancing down the wicket. Looking for the second. Wants to come back. And will make it quite comfortably. Excellent running between the wickets. Knew exactly that he had not timed it well. And excellent running by these two. His partner also obliging to him. On the bounce, straight to the fielder, had extra cover. Dot delivery. Plenty of supporters for the 18 juniors. Hope they don't go home red-faced. Nice delivery. Down the ground. Will get another single.
Nothing short of a spirited unit, this of 8 engineers, as the team started off with a win and since then has not looked back. Entire team of this 8 engineers, plenty of supporters as well present today for this semi-final too. Excellent delivery. Again, just above the stumps. Too close to cut. After 9. Working it around, Achit Chigwan knows that him and DP can definitely solidify their chances in this game. As far as the men in the red are concerned, they need wickets, and especially of these two men in the middle. These two certainly hold the key. In the gap, that's running toward the fence. In the field, wants that man, an extra man on the offside. Maybe wants that fine leg towards the third man, but no, he's staying with the same ploy. Up and over the infield, Viraj Tar has the boundary rider. Will just be another single. Nicely played again by Ajit Chigwan. Highest run getter in the competition, ACL Season 7. 100 to his name. Skip leading from the front of the loyal challengers. Short delivery. Quick delivery that time. Just trying to thread it through the offside. Maybe through point or back to the point. Missed out on that occasion. Was very quick, very nippy. Here's Rohan. Up in the air. Chance. Oh, not going to the hands. And another couple of runs added. Halfway stage after 10.
पर गेंद स्कूप कर दिया इस बार खूबसूरती के साथ। अच्छी सिगवान केवल यही खिलाड़ी कमाल कर दिखा सकता है। और इस टूर्नामेंट का सबसे पहला शतक इसी खिलाड़ी का, एकमात्र 116 रन 56 गेंदों में। तो लीगल टाइटंस और लॉयस चैलेंजर्स की दो टीमें बिल्कुल नया इतिहास रचती हुई सीजन 7 में। बड़ा शॉट मैदान के बाहर, टाटा बाय बाय, 6 रन। तो कारपेंटरों का एकमात्र विश्वास लकड़ी सागवान पर और एडवोकेट्स का एकमात्र विश्वास बल्लेबाज सिगवान पर। अच्छी सिगवान फिर से एक बार बल्लेबाजी के क्रम में। इसी भी अच्छी स्टंपिंग और आउट। दत्ता प्रसाद शिरोडकर। देख सकते हैं दोनों टीम ओनर एडवोकेट दत्ता प्रसाद लवंडे, एडवोकेट योगेश नाटकर्णी साहब, टीम मैनेजर नीलय नाइक और अदर्स पूरी तरह से खुश। The name 18 Juners comes with the offices situated of Advocate Dutta Prasad Lavande at 18 June Road, and the office of Advocate Yogesh V. Natkarni is also situated in 18 June Roads. So the name comes 18 Juners. Watchful Rusaj Talaulika. Little pocket dynamite, छोटा size, बड़ा धमाका. Always wears that red cap. The red is the sign of danger. Red cap against the red jerseys. The teammate in Juno is also equally dangerous. Lovely drive down the ground, but finds the field in the long off. Should be two. Watch Sigval is pushing hard for it, and will get it easily. Both the batters are sprinting, like going for a 100 meters run. And what a wonderful 2 runs to end the over.
Yemen. Oh, nicely played. It finds the fielder. There is a protection. So this is the beauty of Loy's challenges. Every fall of the wicket, the team comes up stronger, more strong, in fact, with the partnership. Another partnership you see. Lovely shot. Once again, the ball is up, and there's a fielder. Will he get to it? On top of his head for another six. Mighty from the trust, the captain himself, Achit Sigwan. And look at the coincidence, just had been to one bungalow for the installation of CCTV, as I'm the engineer. And there it was, that door made beautifully carved with the wood sagwan. And I quickly remembered my friend and the talented captain of Loy's Challenges, Achit Sigwan. Very strong. Sagwan or Sigwan. Another one, this time didn't quite get a hold of that one, but we'll get a single at least. Look at the timing, how important it plays the role in the game of cricket. Whenever we see a good timing from coming from the bat of the captain, it goes flying high up in the sky, as if the ball got the wings to fly. Lovely drive towards the cover. This time looking for two. The first one is very quick. Rusaj Talalika is the fastest among them all. Like how the cheetah is the fastest among the animals. And Rusaj among the players. Runs at the speed of 160 kilometers an hour. You will not see his feet touching the ground. That is the speed he picks up within 3 seconds from 0 to 160. Full toss. Loose delivery. And just got away with that, Akshay Vengudekar. Good to see my good. टीम जो जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश करते हुए एसीएल सीजन 7वां और फाइनल में बिल्कुल अपनी जगह बना चुकी है टीम लीगल टाइटंस। 216 रन का पीछा किया उन्होंने, बिल्कुल लाजवाब पारी खेली। काइल टिकलो ने सभी का दिल जीत लिया अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से।
भटकी हुई गेंद इस बार बिल्कुल बैकफुट पर बढ़िया ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास सफल। केवल 1 रन बल्लेबाजों को मिलेगा। रुसराज तलालुकल हमेशा अक्सर बिल्कुल गैप ढूंढ निकालने की कोशिश करते हुए, इस बार फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। कवर्स में बिल्कुल एक दीवार बन के खड़ा है वो फील्डर। गिरेगा मगर गेंद को जाने नहीं देगा। इस प्रकार की कमिटमेंट 18 जूनियर्स की ओर से दिखाई देती हुई। कदमों का इस्तेमाल किया है, फिर से एक बार उड़ा दिया है और ये कैच। डिस्टेंस पे रह गए और कप्तान की पारी का अंत होता हुआ काफी नाराज। बिल्कुल बाउंड्री के एज पर ऐसे लगा कि गेंद जाएगी 6 रन के लिए, मगर काशी ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और आशीष सिगवान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 37 रन बनाकर कप्तान आउट। काफी नाराज बिल्कुल 18 जूनियर्स ने ग्रेट वाइट को पकड़ा है नेट में। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। संदीप गोसावी को मिलता हुआ विकेट की सफलता। इसी बीच वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, केवल 1 रन। शैलेश रेडकर नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए। रुसाज तलाली के साथ 4 विकेटों का पतन हो चुका है पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर। स्वप्निल, ऋषभ, दत्त प्रसाद शिरोडकर और कप्तान अचित सिगवान का विकेट गिरता हुआ। बैक ऑफ हैंड मगर कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल किया। केवल 1 रन अवश्य मिलेगा और एक साझेदारी बनाने की शुरुआत होती हुई, मगर अगर टिक पाते अचित सिगवान तो बिल्कुल 2 बड़े शॉट लगा चुके थे। तीसरे बड़े शॉट की फिराक में डिस्टेंस पे रह गए, वरना निश्चित तौर पर और थोड़ी ताकत लगाते तो और एक 6 देखने को मिलता। वैसे बीच का दिशा की और कैच का मौका, मगर इस बार जजमेंट पर थोड़ा सा चूकते हुए और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार 4 रनों। बैक ऑफ हैंड, फिर से एक बार गेंद हवा में, मगर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। जा सकती है गेंद सीमा रेखा पार। बैक टू बैक बाउंड्रीज पर होते हुए इन आउट, जो कि वीरेंद्र सहवाग
तलावलीकर, छोटा साइज बड़ा धमाका, यही इनकी बल्लेबाजी है। और उनके साथ शैलेश रेडकर। अक्सर हम लंबे ऊंचे कद के गेंदबाजों की तारीफ करते हैं, जैसन होल्डर वेस्टइंडीज के लिए, अभय कुरुविला ईशांत शर्मा इंडिया के लिए, मोहम्मद इरफान पाकिस्तान के लिए। और अगर छोटे कद के बल्लेबाजों की बात की जाए तो डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रुसाज तलावलीकर, अनूप कुलकर्णी, कमाल के बल्लेबाज छोटे साइज के। ओ बिल्कुल केवल स्कूप कर दिया है और गेंद रफ्तार पकड़ दी भी। ये कमाल केवल रुसाज तलावलीकर कर सकते हैं। ये शब्द एक दूसरे से कहते हुए जबकि 4 विकेटें गिरी हैं, सबसे बड़ा झटका अचित सिगवान के रूप में मिलता हुआ लोएस्ट चैलेंजर्स को। संदीप गोसावी की गेंदबाजी पर बस एक ही नाम है काफी, वो नाम है काशी ने सुंदर कैच लेकर धमाल मचा दिया। फिर से एक बार कलायों का इस्तेमाल, इस बार शैलेश रेडकर की ओर से। जब तक गेंद को समेट कर थ्रो करते, थोड़ा सा वाइड थ्रो था, एक और रन आसानी के साथ स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। धीरे धीरे जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की फिराक में लॉयस चैलेंजर्स। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, गेंद हवा में, खतरनाक शॉट साबित हो सकता था। ये पूरी तरह से मिस टाइमिंग कर बैठे थे रुसाज। एक गलती बल्लेबाज के लिए काफी है, उस बल्लेबाज को पवेलियन लौटाने के लिए। संभल कर बिल्कुल फ्लैटर गेंद डाली गई थी। जिस प्रकार से मिश्रण करते हैं विराजदार, बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं देते गेंद को बाउंड्री पार भेजने में। पटकी हुई गेंद इस बार धीमी गति से, मगर गेंद को पढ़ लिया था शैलेश रेडकर ने और एक रन का इजाफा होता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन स्कोर के खाते में 14 ओवरों की समाप्ति के बाद। एंड 14 114 for 4, so lot of fours in the figures. आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है कि हार कर भी हम हंसते रहे, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। मगर यूनाइटेड ब्रदर्स की तारीफ करनी होगी, इस श्रृंखला की, इस लीग की सबसे मजबूत टीम फिलहाल पहली सेमीफाइनल में इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई। 15वीं ओवर की शुरुआत
बिल्कुल बैकफुट पर खेल दिया है। एक रन की कोशिश, 2 रन की कोशिश रहेगी यहां पर और आसानी के साथ मिल भी पाएंगे। तो बिल्कुल लगातार इक्का दुक्का रन के साथ रनों का सिलसिला जारी है और जिस बल्लेबाज ने लीगल टाइटंस को शुरुआत दी, 16 का डोला, 46 की छाती, नाम है सचिन माउस्कर। नाम है माउस्कर, मगर अगर आप उन्हें देखेंगे तो बिल्कुल एक बड़ा हाथी के जैसे। कमाल की बल्लेबाजी की शुरुआत प्रवीण गावस, किशन कन्हैया और फिर कायल टिकलो ने तो मैच का समापन ही कर दिया। संभलकर बुल की पूरी जिम्मेदारी के साथ और 1 रन का इजाफा, धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 118 रनों पर। 18 जूनर्स आज पूरे लश्कर के साथ आए हैं। I can see ladies and gentlemen as well in the dugout of 18 Juners. बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, खतरनाक हो सकता है ये। सुंदर कैच लेकर बस एक ही नाम है काफी और वो नाम है काशी। बिल्कुल, मगर पहला कैच जो सबसे बेहतरीन लिया गया वो है कायल टिकलो के नाम जाता है। मगर सुंदर कैचेस की श्रेणी में काशीनाथ का ये कैच भी सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। बस एक ही नाम है काफी और वो नाम है काशी। आदिल बल्लेबाजी में आए हैं, लंबी ऊंची गति की अपील कॉट बिहाइंड की, मगर क्या ही बेहतरीन ओवर करता हुआ कृष्णकांत का। तो आखिरी गेंद पर संभल कर रक्षात्मक तरीके से खेला आदिल नए बल्लेबाज, मगर क्या ही बेहतरीन ओवर। तो 15 Immaculate. 118 for the loss of 5 wickets. 30 more deliveries remaining in this bowling of 18 Juners. And Akshay has come on to bowl from the Kautilya Lekha Bhavan end. Nicely played. Of the front foot will just be one. Very spirited. The supporters of 18 Juners got the 5 wickets.
That's wide, extras. Again, just trying to cut that one. Missed out. Dot delivery. Again, looking to cut. Akshay Vengulekar bowling that stood line just outside the off stump. This game's live on YouTube through Photosonic Productions. Cut away. But straight to the field at back to the point. Sachin Sardesai. Photosonic Productions have brought in the Photosonics GOASPORTZ Live It On package drinking water. Special discounted rates for any tournament if you are getting in touch with them. Full toss was down the track and will get one. Another single taken. So far has been a pretty tidy this by the bowlers of 18 Junas. Not giving anything away. Got the main wickets. Just that Adil and Rusaj in the middle. We need to contain them now. Short delivery. Played up and over. The fielder will cut it off. Looking for the second and will make it quite comfortably. Both the batsmen Rusaj coming towards the danger end. After completion of 17. 16 or we'd like to thank all the patrons for the ACL Season 7. Desert and More, Sherwin Shaw, Ethernet Express, Jemson's Histed Private Limited, Priority Constructions, Mustafa Collections, Bali Resorts, Prescon Homes Private Limited, Chirag Datta Naik Initiative, Manas Developers, Confeteria 31st January Bakery, Heavison Infra, Felicity Group, Real Drinks, Hype. Best compliments from Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlikar, Advocate S.N. Joshi, Advocate Gajanan Korgaonkar, Advocate M.S. Joshi, Mr. Viraj Paras, Mr. Lalji Deboya, Mr. Balkrishna Hudarkar, Mr. Siddesh Amodkar, Mr. Iqbal Mohiddin, Mr. Prasad Shet, and Mr. Vijay Patil. The entire committee of ACL would like to thank each and every one of them for their invaluable support. That's left alone. That will be wide. Extras. Again, looking to play it on the onside. Missed out.
Everybody went up, but the umpire not amused with that appeal. Excellent delivery though. Just came in. Again, this time the finger goes up. And with that wicket of Rusaj Tawalekar, elated. Six wickets down for the loyal challengers. Knocked him over, gone. First delivery. $125 for the loss of 7 wickets. And to face the hat-trick delivery, in comes Iftikhar Aga. Hat-trick delivery. Iftikhar Aga walks out to bat. Kashinath on a hat-trick. Iftikhar Aga on strike. Oh, excellent delivery. Dot delivery. Pressure being mounted on the new man, Iftikhar Aga, as he was definitely not ready for that one. That came in quickly and went the other way. Well, the supporters of the 8 engineers dancing in the aisles, they are just jubilant. Cut away. Some work for the fielder at third man. Will just be one. Oh, that's gone through, but there is some backup. Just the single gets off the mark with that one. Iftikhar Aga, 126 for the loss of 7 wickets. Adil still there in the middle. It's nicely played. Will again get a single, Adil, to retain the strike after completion of 17. It's 127
for the loss of 7. 1-7 for 7 after completion of 17 overs. $360. Or are the 8 engineers trying to get those 3 wickets within these 3 overs so that they get around 140, 130 to chase down? That's up in the air. Will fall in no man's land. And bounce to the fielder. Just be one. A single taken. Tremendous performance this by the unit of 8 engineers. Knocked him over, gone. Looking to just play it fine. Shuffled across. New man in Parag. That's wide. Extras. 2 more wickets left. Up in the air. Chance. And taken. 9 down. And Parag also departs. 9 wickets already. $129 for 9. Excellent fight back this. A juncture of the game where it was going so smoothly for the Lawyer challengers when Ajit Chigwan and DP were batting. But since their dismissals, the men in red have certainly turned the man in black into red with all the wickets that they have taken. Left-handed batsman Harsh Mashelkar on strike. Man at deep mid-wicket on the fence. Long on, long off.
And Manet back to the square. Good delivery, excellent delivery. Again, bowling it full is Rohan. We saw a very high scoring encounter in the semi-final one where 216 was chased down. But this particular game, low scoring game, but you never know. Sometimes the low scoring games provide you with more thrill. And this is a champion side. 18 juniors as well as the lower challenges. This time down the ground. And will not take the single. 18 done. It's 129 for 9. Nicely played. It's a no ball. And that will go for 4. 42 years boundary. This will be bonus. Might have just been slipping out of his hands. Kashinath on that occasion to Adil. Excellent delivery. Looking for the single, but sandbag. Chance. No, not quite. Harsh Mashelkar reaching to the danger end comfortably. Smash down the ground. Fielder will cut it off. Looking for the second, but it's not on. As excellent return from that fielder on the boundary rope. Again, Harsh Mashelkar on strike now. What can he do? Does he get a single and give the strike back to Adil? Or does he try and go the top? As far as Kashinath is concerned, he'll certainly be aiming those stumps or the pads. Nicely behind it. Will get one. Harsh get at the mark with that single. Swing. And will take the bye. Another single taken. Certainly slowly and steadily they are moving towards that 140, 150 mark. The lower challengers against 18 juniors.
Swung cross. Dot delivery. Again, grand finale coming up tomorrow at exactly 6 in the evening. Already one team that has booked their place in the finals. Legal Titans waiting for the result of this particular game. Lawyer Challengers and 18 Juniors. Will it be the wrapped on the pads? Not out, says the umpire. Dot delivery to end the over after completion of 19. It's 137. From Rohan. 137 for 9. Miscued. Not timing it well. Looking for the second, but can't be achieved. Just a single. 138. What are they looking at? Last 5 deliveries in this innings. Played down the ground, fielder. Oh, that's been put down. Will just be 1. Score moves to 139. 139. Last 4 deliveries in this innings. Final 4 deliveries. Deciding to bet first after winning the toss. Final 4 deliveries in the semi-final to first innings. Nicely worked. Looking for the second. Does it have enough legs to go to the boundary? It does. Nine wickets. Last 3 deliveries in this innings. Final 3 deliveries coming from Rohan. As extra man has been shifted on the fence. A man from somewhere has to come in. Yes, man from third man has been brought inside the ring. Up in the air, down the ground, fielder. And that's gone all the way for 6. Reverse attempted, but straight to the fielder. Doesn't take the single. Final delivery in this innings. 149 for 9.
Right now, just one delivery remaining. Final delivery. Full toss. Up in the air. Will it fall in no man's land? It does. Looking for the second. And they will achieve it quite comfortably. Looking for the third now. And this could be run out at the keeper's end. So only two could be manageable on the final delivery. Innings of Lawyer Challengers. Deciding to bat first after winning the toss. Datta Prasad with 24 and Ajit Chigwan with 37 were the top scorers. The highlight in batting with Prasad 16 and Shailesh Redkar with 14 runs. Also, Adil made some really good contribution with 17 for him. Apart from that, nobody really standing the guard. As 151 for the loss of 9 wickets has been scaled down. Talking about the bowlers, Akshay bowled really well. So did Viraj Tar.
ready and yes we are. ये मेरी ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन मैं आ गया हूं तो थोड़ा कयाम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा सभी एडवोकेट्स को सलाम करता चलूं। तो सभी सुनने वालों को नदीम अहमद की ओर से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, और अदर शुड आई से वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। 152 रनों का पीछा करेगी टीम 18 जूनस। सचिन सरदेसाई बल्लेबाजी कर्मी और उनके साथ मैदान पर उतरते हुए निखिल, और गेंदबाजी में दत्त प्रसाद शिरोडकर। 152 रन डिफेंड करने हैं लॉयस चैलेंजर्स के लिए। दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला, तो क्या कुछ होगा इस मैच में, चलिए चलते हैं, देखते हैं लाइव एक्शन इस खूबसूरत मैदान पर। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन और इससे बेहतर मैदान आपको पूरे गोवा में शायद ही देखने को मिलेगा। तो दत्ता प्रसाद शिरोडकर गेंदबाजी में पूरी तरह से तैयार। पहली गेंद हल्की सी बाहर को जाती हुई गेंद और वाइड का इशारा। पहली गेंद पर अतिरिक्त, और काफी खूबसूरत मैदान जो कि गोवा के सरजमीन पर शामिल, उनका भी जिक्र करता चलूं। बैकफुट पर बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, मगर फील्डर को पाया। सचिन एक बेहतरीन बल्लेबाज, अगर एडवोकेट्स क्रिकेट लीग की बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजों की श्रेणी में उनका नाम सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा। एक रन के साथ अपना खाता खुलते हुए सचिन सरदेसाई, और उनके नाम बिल्कुल काफी रिकॉर्ड शामिल। केवल 56 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं 150 रन। जो एक टीम बना सकती है उतने रन, जो कि आपने देखा कि लॉयस चैलेंजर्स 152 टू विन 151 रन बनाए। सचिन सरदेसाई ने केवल एक T20 में 150 रन अपने बल्ले से बनाए थे। So that is the caliber of this wonderful batter, Sachin Sardesai, who's on the non-strike side. और अगर बात की जाए निखिल की, तो छोटे कद के बल्लेबाजों की श्रेणी में उनका भी नाम शामिल। डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ऋतुराज तरावलीकर, अनूप पुरतरकर और निखिल, काफी सारे नाम जुड़ेंगे और बिल्कुल एक नया इतिहास रचती हुई एडवोकेट्स क्रिकेट लीग इज ग्रोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ by each passing year. So golden words of Dr. Sagar Salgaonkar. संभलकर खेल, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और निखिल अपना खाता खोलते हुए, और 2 रन का मौका यहां पर मिलता हुआ 3 रन की कोशिश भी कर पाएंगे और मिलेंगे भी। और मैं अक्सर हमेशा मराठी में कहता हूं, चुकीला माफी नहीं। गलती करोगे और निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतोगे। बढ़िया ड्राइव, इसी बीच जिस प्रकार से स्टांस लेते हैं, फुटवर्क करते हैं, पूरे बल्ले का मिलाव, टेक्निकली अगर मैं बात की जाए तो बिल्कुल एक संपूर्ण बल्लेबाज सचिन सरदेसाई। इस बल्लेबाज की कितनी भी तारीफ की जाए वो कम। एडवोकेट्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और सिडनी गए थे मैच खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया। काफी अनुभव और काफी अनुभवी बल्लेबाज से बीच कलाओं का खूबसूरत इस्तेमाल किया। फिर से एक बार 2 रन की कोशिश और शायद गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4
तय है। एटीन जूनियर्स का एटीट्यूड बिल्कुल लाजवाब, डगआउट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ 18 जूनियर्स का। इसी प्रकार की सपोर्ट की आशंका थी और निलय नायक ने मुझे कहा था कि जब हम आएंगे सेमीफाइनल में तो पूरे लश्कर के साथ आएंगे, और आ भी चुके हैं। तो पहली ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी नुकसान के। पटकी हुई गेंद, बढ़िया ड्राइव का उसकी दिशा किया और गेंद बिल्कुल रफ्तार पकड़ते हुए सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। मैचों में इस बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला, नाम है सचिन, और पिछली मैच में इस बल्लेबाज ने मुझे कहा कि आज मेरा बल्ला चलेगा, नहीं चला, मगर आज निश्चित तौर पर यह बल्लेबाज का बल्ला जरूर चलेगा। बढ़िया टाइमिंग से भरपूर शॉट। एक रन आसानी के साथ, बिल्कुल कंट्रोल एग्रेशन की बेहतरीन मिसाल यहां पर कायम करते हुए जब कभी मिलता है मौका तो मारते हैं जमकर चौका, उसके बाद इक्का दुक्का रन के साथ रनों का आंकड़ा आगे बढ़ाते हुए क्या बेहतरीन शुरुआत और कॉम्बिनेशन में देखिए, बिल्कुल बढ़िया जिस प्रकार की होनी चाहिए। दाद देनी होगी कप्तान प्रदोष डांगी को, जिस प्रकार से उनकी गेम प्लानिंग है लाजवाब। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल शुरुआत से गेंदबाजों को तंग करते हुए, फील्डरों को यहां से वहां दौड़ाते हुए, मगर इसी बीच बल्लेबाज रन चुराते हुए। और 18 जूनस पूरी बैंड बाजा बारात के साथ आई है। आज जीत से कुछ कम नहीं लेके जाएंगे, जीत के जाएंगे, ये ठान कर आए हैं। उनके जज्बे को सलाम। हल्की सी दिशाहीन गेंद, डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास असफल, मगर एक रन आसानी के साथ मिलेगा। शायद वाइड का इशारा होगा, बिल्कुल विजय कुमार रेड्डी की ओर से आता हुआ इशारा वाइड का, और वाइड के साथ एक और रन का इजाफा भी, यानी कि 2 रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17, यानी कि मंडरा रहा है खतरा। लॉयस्ट चैलेंजेस पर तोड़ना होगा इस जोड़ी को, वरना यह साझेदारी धीरे धीरे इसे ही मैच को खींच ले जाएगी। 18 जूनस पराग विलुस्कर गेंदबाजी में चुनौती भरी गेंदबाजी निश्चित तौर पर रहेगी उनकी। अच्छी सिगवान स्कोर से काफी खुश बिल्कुल नहीं है। और डाइव लगाकर बिल्कुल बढ़िया प्रयास वहां पर कप्तान की ओर से। बिल्कुल इस प्रकार की कमिटमेंट होनी चाहिए। काफी बड़ी जिम्मेदारी कप्तान की ओर।
निखिल भी एक बेहतरीन बल्लेबाज। बाएं हाथ की अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो राहुल सेठ और निखिल ने अपना परचम लहराया है अपनी सुंदर बल्लेबाजी के दम पर इस श्रृंखला में। सी पिच पूरी तरह से चूके, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात जो कि गेंद को रोकेंगे। धीरे धीरे ही मगर एक अच्छी ओवर घटाते हुए पराग विलुस्कर, जबकि दूसरी ओवर प्रगति पर 152 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 18 जूनस। आज सचिन ने सभी से कहा कि मैं खेलेगा, और बिल्कुल खेल भी रहा है। सुंदर शॉट्स, बैकफुट पर संभल कर कलाई का खूब से इस्तेमाल किया। अगर बेहतरीन बल्लेबाजों की बात की जाए एडवोकेट्स क्रिकेट लीग में तो बड़े नाम शामिल, जिसमें अचित सिगवान, रुसाज तलावलीकर, निखिल, सचिन सरदेसाई, अनूप कुर्तड़कर, 18 जूनियर्स के कप्तान प्रदोष ढांगी स्वयं एक बेहतरीन बल्लेबाज। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, मगर अपनी गेंदबाजी पर सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा पराग विलस्कर की ओर से, और इस बेहतरीन फील्डिंग के साथ ओवर की समाप्ति भी। 2 ओवर समाप्त, 19 रन बिना किसी नुकसान के। 18 जूनियर्स तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में फिर से एक बार दत्ता प्रसाद शिरोडकर। अजय सिगवान ने इस टूर्नामेंट में अब तक लगभग 300 रन बनाए हैं। सत्यम 183 इस मैच को छोड़कर, दत्तराज 165, वेंकटेश 154, रुसाज तलावलीकर 149, दत्ता प्रसाद 146, दत्तराज गावस 142। फुल टॉस गेंद, कड़ा प्रहार, 4 रन। माफी नहीं। संभल कर इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है कवच की दिशा की ओर, कोई रन का मौका नहीं, मगर मेजर्ड इनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से जिम्मेदारी के साथ अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए मैदान पर। पटकी हुई गेंद इस बार हल्की सी बाहर को जाती हुई, फिर से एक बार ड्राइव करने की कोशिश, मगर फील्डर की ओर ढकेली गई है। अच्छी गेंदों को बिल्कुल पूरा सम्मान देते हैं और बुरी गेंदों पर कड़ा प्रहार करते हैं, यह बल्लेबाजी निखिल की है। कर दिया है प्रहार इस बार,
मगर अच्छा फुटवर्क। जब कभी मिलता है मौका तो फुटबॉल खेला करो, क्योंकि समटाइम्स प्लेइंग फुटबॉल हेल्प्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। अक्सर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन का काफी जिक्र होता है, मगर आई लेग कोऑर्डिनेशन का होना भी काफी जरूरी। एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए यहां पर फील्डर, इट वाज अ गुड फुटवर्क, नॉट ऑलवेज बाय द बैटर बट समटाइम्स आल्सो बाय द फील्डर्स। बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड, मगर गेंद हवा में थी। जब तक गेंद आती 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, मगर ये ड्राइव काफी खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि सचिन ने खेल दिया था लगभग गेंदबाज की ओर। अगर अबरार अंपायर न होते तो लपक लेते उस कैच को। फिर से एक बार संभल कर सुंदर गेंदबाजी, विकेट टू विकेट। तो एक बेहतरीन ओवर फिर से एक बार खड़ाते हुए दत्ता प्रसाद शिरोडकर। तो डॉट गेंद के साथ 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 26 रन बिना किसी नुकसान के। 18 जूनर्स चेजिंग 152 टू विन। नामों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं इफ्तिकार आगा। चौथे ओवर की शुरुआत और स्कोर 26 बिना किसी नुकसान के। धीरे धीरे मगर लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम 18 जूनर्स। पटकी हुई गेंद, बढ़िया प्रहार, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पहली गेंद पर करारा शॉट और 4 रन बटोरे निखिल ने। स्कोर को पहुंचाया 30 रनों पर। में रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, हम जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार की बल्लेबाजी 18 जूनर्स की ओर से। फिर से एक बार बढ़िया ड्राइव, मगर इस बार फील्डर को पाया पॉइंट की दिशा की ओर। अच्छी कमबैक इफ्तिकार आगा की ओर से। रनों पर किस तरह से अंकुश लगाना इस गेंदबाज से सीखना होगा। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, और इसी बीच गेंद हवा में। कैच का मौका और हाथों से कैच छूटा। रुसाज तलावलीकर, कैच छूटा निखिल का। गेंदबाज का दिल टूटा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विकेट था ये। गलती कर दी थी यहां पर गेंदबाज ने। पहुंच भी चुके थे रुसाज, तो मौका बनाया था इफ्तिकार आगा ने कैच का, इस जोड़ी को तोड़ने का, इस जोड़ी को बिखेरने का, मगर मौका हाथों से जाता रहा। बढ़िया शॉट बैकफुट पर, दमदार, मगर तो क्या उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाएंगे निखिल। छोटे कद के बाएं हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज 18 जूनर्स के, एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाजी में।
संभल कर इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला। जानते हैं कि इफ्तिकार आगा की गेंदों को बड़े शॉट लगाना यानी कि मुश्किलों को न्योता देना होगा। इस बार हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद और वाइड का इशारा। धीमी गति की गेंद डाली गई थी और पूरी तरह लाइन से भटकी हुई गेंद। स्कोर 33 पर। और इस बार लगभग गेंद गई थी फील्डर के पास, मगर जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते 2 रन बटोरते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए 35 रनों पर। लगभग एक अच्छा ओवर घटाया इफ्तिकार आगा ने। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 35 रनों। बढ़िया शॉट इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला गया 1 रन के लिए। मगर जब निखिल का शॉट हवा में था तो 18 जूनियर्स के डगआउट पे बिल्कुल आयोडेक्स की प्रतिक्रिया थी। आउच आयोडेक्स। मगर जैसे ही गेंद जमीन पर गिरी बैंड बाजा बारात बिल्कुल शुरू हो गया था। और मुझे निश्चित तौर पर यकीन है कि इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाएंगे निखिल। कलाई का खूब से इस्तेमाल। इस बार अपील एलबीडब्ल्यू की मगर नकारी गई शायद, लेकिन स्टंप को मिस कर जाती गेंद। अच्छी गेंद के साथ वापसी पराग विलुस करके। मगर इफ्तिकार आगा ने पिछली ओवर में एक मौका जरूर बनाया था, उतना मुश्किल कैच भी नहीं था, रुसाज के लिए काफी आसान। मैं जानता हूं रुसाज इज अ फ्लाइंग मशीन, हवा में तैर कर भी कैचेज उन्होंने ली है। इस बार बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ की ओर और उतनी बेहतरीन फील्डिंग का मजा आ रहा, क्वालिटी फील्डिंग। अब जब से मौका मिला है बिल्कुल कोई हवाई यात्रा पर गेंद को नहीं भेजा है निखिल ने, संभल कर बिल्कुल सचिन की तरह गेंद को जमीन पर रखकर इक्का दुक्का रन के साथ आगे बढ़ते हुए। दैट्स अ स्मार्ट मूव फ्रॉम निखिल आफ्टर दैट लाइफ दैट इज गॉट in the previous over of Iftikhar Agha, and he's definitely trying to make the good use of that opportunity which has got a drop catch by Rusaj Talaudikar in the mid-on region. संभल कर पूरे बल्ले के साथ, कोई छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल मुझे तो लगता है कि इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ओर से बल्लेबाजों को साफ है कि संभल कर खेलो इक्का दुक्का रन के साथ, और वही दिखाई देता हुआ क्रीज पर। नथिंग फिशी बाय द बैटर्स, कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल संभल कर पूरे बल्ले के साथ रक्षात्मक तरीके से इक्का दुक्का रन के साथ, कभी कभार चौके भी। एंड दैट इज एग्जैक्टली द राइट अप्रोच ऑफ द बैटर्स टू स्टार्ट विद। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दी है 18 जूनियर्स के लिए। 152 तो क्या 200 तक पहुंचना भी इस प्रकार की अगर शुरुआत होती है तो पहुंचना आसान।
संभल कर फिर से एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं, नॉट इन अ हरी एट ऑल। डॉट गेंद के साथ 5 ओवर समाप्त। सही Nicely behind it. Dot delivery. 37 without loss right now. The 8 engineers in pursuit of 152. In 20 overs, the 8 engineers, the man in red. Knocked him over, gone. Just that Saish was new man in. Kunal. Straight away a dot delivery. Iftikhar has finally broken this partnership as they were looking for wickets. The Lawyer challengers nicely played through the covers. Gets off the mark with that single does Kunal. Score moves on to 38. 38 for the loss of 1. Change in field as wants that man from covers inside the 30-yard ring and wants the man at deep mid wicket on the fence. Good delivery. That is going towards the fence. And the fielder can't cut that off. That's a boundary.
That will be wide. Extras. Just drifting away. His Iftikhar Aga has created that magic earlier in the tournament. Again, left alone. Dot delivery to end the over. After completion of 6, it's 43 for 1. In fact, 6 overs done, 43 for 1. The 8 engineers requiring 152 to win. 152 in their 20 overs. Here's Parag from the media box end. Short delivery nicely worked off his hips. And that will just be 1. Nicely played. Just away from the reach of the fielder at backward point. Will get 1. Plenty of batting to come as far as the 18 juniors are concerned. Biraj Tar, Saish Mamre. So much depth they have. The man in red. The man in black need to find a way to try and restrict the 8 engineers. Currently, 8 engineers slowly and steadily cruising towards the target. Dot delivery, score still on 45, 45 for 1. In his own follow through, looking for the single, but not chancing, is Sachin Sardesai. And rightly so. Don't want to take any risk at this stage, as these two are certainly trying to build a partnership to take their team towards the safety waters. So why would you try and take a risk?
Nicely again off his hips. Elegant looking stroke. Another single achieved quite comfortably. Need to build some pressure if the man in black need to try and squeeze past inside this total. If not, then the 8 engineers will have no hesitation in batting throughout and trying to get the runs without any pressure, any much of a deal with the run rate. That's left alone and dot delivery to end the over. After completion of 7, it's 46 for 1, 8 engineers. Shifts on that man, Iftikhar Raga, from the media box end. Kunal along with Sachin Sardesai in this partnership, very steadily with very much of caution. Again, nicely played down to the man at wideish long on. Just one. Single taken, score moves to 48. In fact, 47. Apologies, 47. Requiring another 105. Short delivery. And gone. Taken. Straight to the man. The new man in. Bowled really well today. Can he try and get his team over the line in the semi-final too? Down the leg side, that's gone through. And will that be cut off? Indeed it will. Another couple of runs added and wide as well. Score moves on to 50. 50 for the loss of 2 wickets. 50 for 2 in pursuit of 152. The 8 engineers in this ACL Season 7 semi-final 2. Nicely played, but straight to Iftikhar Raga in his own follow through.
That's gone through. And that will be a boundary. Erring. Excellent delivery that time. Much quicker from Iftikhar Aga. Once the man from third man inside the 30-yard ring. And just to try and build some pressure, a man from covers goes on the fence. Again, drifting onto the leg stump. Will just be one. Another single. Single 20 over after completion of 8. It's 55 for 2. $55 for 2 after 8 overs, requiring another 97 in 72 deliveries. 12 overs remaining. Exactly 72 deliveries and requiring 97 to win. Shailesh Redkar has been given the ball from the media box end. Good delivery, dot delivery. Oh, that's gone through. Was there a chance? Well, definitely the replay will tell you that, if that was a chance or not. Nicely played. Again, a single taken. Pretty cautious and pretty decent enough going this of the 18 Junners. Don't need to rush much. 8 to 9 runs per over. Well within the grasp that required rate. Nicely played down the ground, presenting the full face of the blade. Another single taken. Nicely played again. This time on the onside. Down to deep backward square. Just one. Score moves to 59 for the loss of 2 wickets. This being the 9th over in progress. And this batting of 18 Junners. Target of 152. Nicely played. Just a dab. But straight to Iftikhar Aga.
who quickly coming on to that one stops the single. Dot delivery to end the over after completion of 9. It's 59 for 2. Iftikharaga has come on, requiring 93 to win. Into his last over, Iftikharaga from the media box end. In good delivery, just worked around. Will get another single, score moves to 60. Nicely played. And Achyut Chigwan onto that one. Very well fielded. Certainly saved a boundary for his team. Very nicely played. Easily done that time. The single quite comfortably. Flat batted. Has he found the gap? Indeed he has. Bisecting the two men with perfection. Delivery dragged, and this time trying to cut that one, missed out. Viraj Tar. Again, will get the single that he needs. Another single achieved, halfway mark. It's 67 for 2. 85 will be required to win in the next 10 for 18 juniors to win this game and to try and गेंदबाजी में और वाइड का इशारा। सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला एडुकेट्स क्रिकेट लीग
कई शानदार मौका इसी बीच बिल्कुल बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। विराजदार की बल्लेबाजी, लंबे ऊंचे कद के एक बेहतरीन बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी उनकी खासियत। कुणाल नाटकर्णी स्ट्राइक पर, फ्लैटर गेंद संभल कर रक्षात्मक तरीके से खेला। और जब कभी गेंदबाज फ्लैटर गेंद डालता है तो एक न्योता देता है बल्लेबाज को कि कदमों का इस्तेमाल कर आ गया और बड़ा शॉट खेले। मगर एक मैं तो कहूंगा एक जाल बिछाता है गेंदबाज कि बल्लेबाज फंस जाए, उस चाल को पढ़ लिया था। और इसी बीच बिल्कुल बढ़िया शॉट विराजदार की ओर से, 4 रन। बैकफुट पर बढ़िया ड्राइव, आदिल की सुंदर फील्डिंग। तो डीजे लगातार धुरंधर की टोन प्ले कर हिम्मत अफजाई करते हुए बल्लेबाजों की। कुणाल नाटकर्णी के साथ विराजदार फिर से एक बार एक साझेदारी बनाते हुए, जबकि 2 दिग्गज खिलाड़ी आउट। 18 जूनस के पहले आउट होने वाले बल्लेबाज हैं निखिल। निखिल 21 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सचिन सरदेसाई ने 17 रनों का योगदान दिया अपनी बल्लेबाजी में। बैकफुट पर संभल कर बढ़िया ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन का मौका नहीं। स्वयं कप्तान अचित सिगवान, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब बिल्कुल जिस प्रकार से फील्डिंग और गेंदबाजी हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि लॉयस चैलेंजर्स आर टाइटिंग द स्क्रूज फ्रॉम ऑल एंड्स अप। 6 ओवरों की इसी के साथ फ्यूचर मैचेस में इम्तियाज शेख वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं कप्तान अचित सिगवान। पटकी हुई गेंद संभल कर कलाई के साथ खेल दिया है। 1 रन का इजाफा स्कोर को पहुंचाता हुआ 77 रनों पर 77। और 75 रन की आवश्यकता 53 गेंदों में। 53 balls 75 runs needed is the equation for 18 Juners इस मैच पर कब्जा जमाने के लिए। मिशेल गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है, कप्तान को मिल सकती थी ये विकेट, मगर सेलिब्रेशन क्यों ना होगा डगआउट में 18 जूनर्स के, जबकि 2 आसान कैचेस छोड़ दी गई हैं। शैलेश रेडकर
इसी बीच संभल कर इस बार जानते थे कि पिछली गेंद पर गलती कर दी थी, मगर कैचेस का लेना जरूरी, और इस मौके पर पकड़ो कैच जीतो मैच, सिंपल फंडा है, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। शैलेश रेड करने हैं, छोड़ दिया, आसान सा कैच। कप्तान ने बिल्कुल बनाया था मौका और बेहतरीन गेंदबाजी करते, मिश्रण लाजवाब अचित सिगवान की ओर से। और ये टूर्नामेंट के लिए काफी बेहतरीन रहा है। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने शतक लगाया वो है अचित सिगवान। बढ़िया लाइनिंग, जबरदस्त लाइन, बिल्कुल मिडल स्टंप पर। नथिंग मच फॉर द बैटर्स टू वर्क विद। विराज तार एक बेहतरीन बल्लेबाज है, मगर उसके बावजूद इस प्रकार की गेंदें डाली जा रही हैं अचित सिगवान की ओर से कि कोई जवाब नहीं विराज तार की ओर से। विराज तार आर या पार इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए माहिर। पटकी गेंद बार आउट, ले लीजिए विकेट की सफलता अचित सिगवान ने दिलाई इसी ओवर में। कप्तान स्वयं प्रदोष ढांगी थोड़ी सी वार्म अप के साथ तैयार, जानते हैं कि लंबी पारी खेलनी है। इस आर या पार की लड़ाई में फिलहाल विराज तार आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, यानी कि तीसरे विकेट का झटका लगता हुआ 18 जूनस को। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद, एडुकेट क्रिकेट लीग को पूरा सपोर्ट करने के लिए, और बिल्कुल गोवा क्रिकेट एसोसिएशन न्यू लीडरशिप में टैलेंट को उभारने की भरपूर कोशिश करती हुई है। फ्लैटर गेंद इस बार संभल कर खेला है, 1 रन। तो फिर से एक बार यहां पर कार्य रहेगा बल्लेबाजों के लिए कि फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी बनाएं, और 18 जूनस की यही खासियत, हर विकेट गिरने के बाद एक मजबूत साझेदारी बना सकती है टीम। कुछ कमी टीमों में इस प्रकार की खासियत, एक 18 जूनस, दूसरे लॉयस चैलेंजर्स और तीसरे लीगल टाइटंस, जो हर विकेट फॉल के बाद मजबूती से साझेदारी बनाकर स्थिति को संभाल लेती है। प्रदोष इस बार ड्राइव करने की कोशिश, मगर सही पकड़ नहीं बनाई, मगर कोई रन का मौका भी नहीं। तारीफ करनी होगी अचित सिगवान की, जिस प्रकार से आए थे गेंदबाजी में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि विकेट लेने की फिराक में है ये। फ्लाइट अगेन इस बार स्क्वायर लेग की ओर खेला गया, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन ही मिल पाएगा कप्तान को अपना खाता खोलने के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे से 81 रनों पर 152, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। आधा सफर तय कर चुकी है टीम 18 जूनस, अभी भी आधा सफर तय करना बाकी, मगर ये आधा सफर मुश्किलों से भरपूर रहेगा।
बढ़िया ड्राइव, इसी बीच हल्के हाथों से एक रन आसानी के साथ मिल पाएगा। धीरे धीरे फिर से एक बार इक्का दुक्का रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 पर। बढ़िया शॉट बैक फुट पर, और बिल्कुल तारीफ करनी होगी एडीन जूनस के कप्तान प्रदोष ढांगी की, जिस प्रकार से उनकी भी बल्लेबाजी रही है हर एक मैच में। कप्तानी भरी पारी निश्चित तौर पर खेली है उन्होंने। जब कभी बल्लेबाजी के लिए जाते हैं तो जानते हैं कि उन पर काफी जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाते। इसी बीच एक मौका था मगर ललचाने वाला, जिस प्रकार से लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे, बिल्कुल उसी तरह से गेंद थी। अंगूर मिल गए तो अंगूर मीठे, अब जब नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। तेरह ओवरों की समाप्ति पर तो अभी भी ये कहना मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी, मगर निश्चित तौर पर फिलहाल ड्राइवर सीट पर 18 जूनस। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, मगर एक रन आसानी के साथ मिल पाएगा। हल्की सी चूक वहां पर, मगर इफ्तिकार आगा तुरंत गेंद पर लपके, कोई दूसरे रन का मौका नहीं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी खिलाड़ी ने गलती कर दी, चूक कर दी, तो बिल्कुल मैच से हाथ धोना पड़ेगा। फील्डरों के लिए कोई मौका नहीं कैच छोड़ने का। हर कैच को पकड़ना होगा, हर गेंद को रोकना होगा, वरना 18 जूनस देखते ही देखते इस मैच पर पूरा कब्जा जमा लेगी। इतनी मजबूत टीम 18 जूनस, और 18 जूनस के हौसले और भी बुलंद जब कप्तान स्वयं क्रीज पर मौजूद प्रदोष ढांगे, कैप्टन। ओ इनसाइड एज, काफी खतरनाक हो सकता था ये, मगर भाग्य ने साथ दिया और एक रन का इजाफा। धीरे धीरे एक एक रन के साथ आगे बढ़ती फिलहाल रफ्तार, बिल्कुल कछुए की तरह, मगर कोई समय नहीं लेगी जब रफ्तार पकड़ेगी खरगोश की तरह 18 जूनस। मगर हम सभी जानते हैं कि यह कछुए ने खरगोश को भी हराया था, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और इसी भी अक्रॉस द बैट काफी खतरनाक ये हो सकता था, मगर जानते थे कि थोड़ी सी दिशाहीन गेंद है। देखिए हल्की सी प्रतिक्रिया जो कि कप्तान अक्षित सिगवान की ओर से, हाथ बिल्कुल सर पर, कितना करीबी मामला था। इस मोड़ पर एक अच्छी साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी 18 जूनस के लिए। विकेट यहां पर मुश्किलों में आ सकती है टीम 18 जूनस। फिर से एक बार सुंदर गेंदबाजी। द कैप्टन इज डेफिनेटली बॉलिंग इज हार्ट आउट। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल 37 रनों का योगदान दिया, जानते थे कि कम है, मगर अब अपनी गेंदबाजी से बिल्कुल विकेट लेने की पूरी कोशिश करते हुए अक्षित सिगवान। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, देखना होगा क्या गेंद को रोक पाएंगे। बिल्कुल सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया, तो केवल एक रन
से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। फिर से एक बार एक बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ, 14 ओवर की समाप्ति, 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एंड ऑफ 14, 88 for 3, 18 Juners. तो 36 गेंदें 64 रन, 36 balls 64 runs to get to the target of 152 to win. शैलेश रेडकर की गेंदबाजी फिर से एक बार 15वीं ओवर में गेंदबाज शैलेश को लाया गया है। पहली गेंद पर 1 रन स्कोर को पहुंचाता हुआ 89 रनों पर, और शैलेश रेडकर का ये आखिरी ओवर रहेगा। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। कदमों का गेंद हाफ वॉली पर बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात जो कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और 1 रन। हर एक ओवर में 10 रन अब किस प्रकार से बनाएंगे बल्लेबाज, ये काफी कुछ इन पर निर्भर करेगा। बड़ा शॉट कप्तान के बल्ले से, मगर उतनी ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। हर एक गेंद पर 1-1 रन केवल। सिंगल्स वेट फॉर द बिग वन, शायद ये रणनीति है। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और 1 रन मिल सकता है, यानी कि अब तक कुल मिलाकर 4 गेंदें डाली गई हैं और 4 रन मिले हैं। स्कोर था 88, स्कोर पहुंच चुका है 92। 60 रनों की आवश्यकता 32 गेंदों में। जब कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं कि मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, तो 32 गेंदें बाकी है और 60 रन। और इस बार हल्की सी दिशाहीन गेंद, कुछ रन मिलेंगे यहां पर, निश्चित तौर पर वाइड भी मिल सकता है। सम बोनस रन्स, तो 2 रन मिल चुके हैं और ये हाथ फैला दिए तो फिर 30 रन भी मिलेगा, मगर हाथों को बिल्कुल कसकर बांधा है अंपायर ने। कोई वाइड नहीं, ओनली 2 रन ऑफ द बैट। तो 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। इसी बीच बढ़िया शॉट, वहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मगर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए।
Kunal along with Pradosh Dangi in the middle. And here's DP. Good delivery, but down the ground. Gets one. 51 required. In fact, 53 required. 99 for the loss of one. 29 deliveries remaining and 53 to win. Again, just biding his time. Wants to get everything ready. Just to try and break that momentum. Up in the air. Fielder coming in. But will fall in no man's land. As that fielder, if shown some urgency, would have been into his hands, but not to be. Would be a half chance that was created. Nicely played. On the bounce. Fielder, would have been gone. But nobody backing up. Another extra run. With that 100 up for the 18 juniors. Nicely played. Again, doing it quite comfortably, these two. Not trying to take any risk, and this risk-free cricket is definitely taking them towards that target. Doesn't require to overhit the ball, just as and when the boundary is needed, they are getting that as well. Gone past the bowler. Will pick up one. Single taken. Score moves to 104. 104 for 3, requiring 48. 48 more required. Nicely played. Sliced away. And that will go towards the boundary. For their tireless support. Earlier for that first semi-final, we had Secretary of GCA, Mr. Tulsidas Shetye. For the toss, for the second, we had Dr. Sagar Salgaonkar, and many monumental figures to be part of the final tomorrow. Here's Achit. Again, turned the bat.
Looking for the second. No, just one. Achit into his third over. Kunal along with Pradosh Dangi. 109 for 3. Full toss. Nicely played. Will get one. Are they going to chance the arm? Yes, they are. Coming back. And that's 2 more runs taken quite comfortably. Another couple of runs. Nelson's up. 1-1-1. The loss of 3. Requiring another 41. In 22 deliveries. 22 deliveries, 41 to win for the 18 juniors. Nicely played, but straight to the fielder at sweeper cover. Again looking for the second. Direct hit. And the TV umpire will have a look whether if that has crossed or not. TV umpire to director, we have a player review for the run out. Him to shake. Looking for that run out referral. And looking for a better angle. Wait, umpire is there. In scorer. So that's out. Red signal comes. With that direct hit. New man in. Saish Mamre. Good delivery. Looking for a single. And will get that single. Gets off the mark. 113 for the loss of 4 wickets. Pulled away. But no proper connection. Looking for the second. But no. Just one. Single taken. Again brings Aish back on strike.
Dot delivery. In fact, that's a wide. Extras. Late bit of call by the official. 115. 115 for 4. In pursuit of 52. 152. Nick. Just gone past the keeper. And that will go towards the boundary for 4. Four wickets. 3 overs and requiring 34 to win. 33 to win. 33 required. Datta Prasad, 1 over remaining of DP. 119 for the loss of 4 wickets. Nicely played. Straight to the man. And will get 1. 32 required now. 32 in 17 deliveries. Nicely played. Looking for a quick single chance. No, not quite. And overthrows. Nobody backing up. Another run. Nicely played. Straight to the man. Another single taken. Doing it in singles right now. Swing. And that's gone. Looking to charge down to the bowler. And completely missing from the line. Another wicket falls as DP produces a wicket, a breakthrough for the Lawyer Challengers. 123 for 5. 18 Junas. Saish Mamre. 1, 2, 3 for 5. 29 required in 14 deliveries. Well, certainly nothing short of a thriller. Previous game as well, semi-final one, where 215 got chased down, and now 152 looks a bit difficult for the man in red. 29 in 14 deliveries.
Sliced away, straight to the man. Iftika Raga keeps it to just a single. Kashinath gets off the mark with that single. 28 in 13. Many supporters for the 18 juniors. Very spirited with the kind of bowling the team did. Again, hammered away down the ground. Down to Vrusaj. Will just be one. Another single taken. 12 deliveries remaining. Final 2 overs. 27 to win. 27 in the last 2 overs for the 18 juniors. Saish Mamre swings it and misses completely. Dot delivery to begin. 27 in 11. The man in red trying to get it in a canter. Where are they trying to manufacture a shot? From which end? This time, no proper timing. Will find just one. Kashinath is quick, but not his partner. Just one. Wants to change the willow. Maybe a message as well to him to try and finish off this game. 126 for 5, requiring 26 in exactly 10 deliveries. Just redirecting his field, Ajit Chigwan, skipper of the Lawyer Challengers. Very spirited team, that Lawyer Challengers. Down the ground, in the air, on the bounce to the fielder. Just one. And single is a good reply as far as the Lawyer Challengers are concerned. But for the 18 juniors, they need boundaries. Where they can find a boundary. 25 now in 9. Oh, just gone through. Excellent effort in his own follow through. Ajit Chigwan, the skipper. 8 deliveries. 24. Game of 4 maximums. Easier said than done. Someone should hit them. Is Kashinath the man to hit those 4 maximums? 8 deliveries, 24 to win. Swings across, misses completely. Keeper doesn't know where the ball went. And they have sneaked in a bye. 23 in 7 deliveries. Well, if you ask me, you can just be pinpoint of where the game got slow in terms of those overs between 11 to 15. They just tried to casually knock the ball around, didn't try to get those boundaries. Swing again, missed again. Dot delivery, excellent over from the skipper, coming to an end. He has bowled his quota for 21 for 1, and last over requiring 23 for the 18 juniors.
129 for 5. 23 required of the last 6 deliveries. Team winning will be reaching the finals. Team losing will be a mere spectator to watch that final. Which team will it be? Will it be team in red or will it be team in black? 18 juniors requiring 23 of the last over. And here's Parag Beruskar from the media box end. "23 in 6 deliveries. Here's Parag to Kashinath. Straight to the man at deep extra cover. Looking for the second. But no. Just one. 22 required in 5. Well, what a game this. 216 chased down in the morning. With a terrific partnership between Kanaya and Kyle Ticklow. Kyle Ticklow, remember, he came out to bat with a broken finger and got his job done for his team. 22 required now in 5. Saish Mamre on strike. Swing missed. Dot delivery. Again looking to up the ante. Missed out. Four deliveries remaining. 22 to win. Can he strike one blow so that the bowler can just feel a bit of pressure? Up in the air. Fielder getting underneath. But can't reach that. Will just be one. So 21 required now in 3 deliveries. Almost there. The lawyer challenges. Swing again, missed again. And missed by the wicketkeeper. Might have been some part of the bat. There's no signal. In fact, now the signal comes as it's byes. Just a mere formality left now in this game. 2 deliveries requiring 20. 18 juniors have themselves to blame. As that middle phase got very cautious and very slow. Where they wanted the boundaries in that partnership. It just didn't go their way. Did got the wickets earlier on, but the start was provided pretty briskly. Just the middle overs couldn't quite get them in their favor. And now, not finding any boundaries in the back end. Also a worrying sign. Good delivery again, and that will be it. Victory for the lawyer challengers. They go through, and they'll be meeting the legal titans in the grand finale, which will be played tomorrow evening.
and we wanted to go to finals. It was